proceedings. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, distinguished guests, respected academics, members of the distinguished community, students, Assalamu alaikum, and a very good morning. On behalf of the Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies CAPS, I am General Secretary Dr. Pervez Khan, welcoming you to this important initiative of Korea-Pakistan Education Expo Inaugural Ceremony 2026. Today's event reflects our collective commitment to strengthening Pakistan and the Korean relationship through education, research, business, collaboration, and most importantly, people-to-people exchanges. This event represents the third major initiative undertaken by CAPS to institutionalize this Pakistan-Korea relationship, and CAPS has consistently worked to develop P2P relationship between both the countries. This is yet another important milestone in continuing this journey. Before I request the President CAPS to share his welcome remarks, I would like to request respected Professor Dr. Ahmad, VC of Riphaah, to please come and take the stage. And may I please request President CAPS and President Tongwon University, Dr. Choi, as well, to please come and have your seats at the rostrum. Thank you, sir. Today's chief guest would be Federal Minister of the Education, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui. He will be joining us shortly. Ladies and gentlemen, please welcome with me the President CAPS, Dr. Khurram Iqbal, for giving his welcome address. Dr. Khurram Iqbal is the founding president and a security scholar whose career has been shaped largely by his engagement across the Asia-Pacific region. He is trained at Nanyang Technological University in Singapore and completed his doctorate at Macquarie University in Australia, where he later held an honorary associate professorship. His early career was spent at Rajaratnam School of International Studies in Singapore, working at the International Center for Political Violence and Terrorism Research, an experience that grounded his understanding of security dynamics across the South and Southeast Asia. He has engaged with leading strategic institutions in China and across the region, specifically Australia, US, Indonesia, and others. May I please request Dr. Khurram Iqbal to please come and have some few words. Assalamu alaikum and a very good morning. I'm grateful to Dr. Pervez, General Secretary CAPS, for a very generous introduction. Honourable Vice Chancellor, Riphaah University, Professor Ahmad, President, Tongwon University, Korea, distinguished faculty members and students. It gives me immense pleasure to welcome you to Korea-Pakistan Education Corridor, an initiative which is conceived to strengthen people-to-people contacts and educational bridges between Korea and Pakistan. And this particular initiative has been taken at a time when the world is going through momentous transformation. We are seeing that traditional patterns of friendship, rivalry, trade are transforming. So are the patterns of higher education. There was a time when students from Global South, including Pakistan, used to prefer big four countries for higher education. And those big four countries include United States of America, United Kingdom, Canada, and Australia. We have roughly 30,000
Pakistani students in United Kingdom, some 28,000 in China, some 24,000 in Australia, and some 7,000 in United States of America. It was mainly for three reasons that students from Global South preferred these Western destinations. Reason number one, the policy of open and free campuses. Number two, existing diaspora networks. And number three, research and innovation. When a student from Pakistan would decide to go to UK, US, Canada, Australia, they had pre-existing diaspora networks which instantly transformed into support networks. So that is one reason that Pakistani students would generally choose for those countries. Number two, these countries have been traditionally known for welcoming international talent. The societies were quite receptive, and then the global hub of research and innovation actually resided in West. But if you look at all these three indicators, all of that is changing very fast. The campuses in the Western world, they are no longer as welcoming as they used to be in the past. It's mainly because of the rise of the identity politics. And because of the rise of identity politics, you see a lot of aversion on part of these big four countries to welcome international talent. For instance, the Chinese students used to form a big cohort of students in America, in Australia and Canada, but because of geopolitical reasons, that's no longer the case because Chinese students are not welcome there any longer. Secondly, it is not just the center of gravity of geopolitics which has changed, but the epicenter of innovation has also moved from west to east. Now we are seeing countries like Japan and South Korea, which are now emerging into hubs of innovation, modern technology, and relevant fields. So, driven by this shift in international landscape, the Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies, we envisioned this Korea-Pakistan education corridor only 6 months ago, and this is the third such activity that we are organizing under what we call KPEC. You might have just heard one CPAC, but now besides CPAC, we have number of PACs to diversify Pakistan's engagement in people-to-people and business-to-business realms. When it comes to South Korea specifically, you'll be surprised to know that within few years, South Korea has emerged as one of the top 10 destinations for international students during last 2 years. Only 2 years ago, South Korean government established a goal of achieving 300,000 international students by 2027. And to our surprise, South Korea has achieved that target 2 years in advance. So the number of international students in South Korea now exceeds 300,000, and that was all done under the program called Study South Korea 300K program. However, as the number of international students in South Korea continues to increase, the Pakistani students make only a fraction of those international students. There are only 1,500 Pakistani students enrolled in South Korean universities. Despite the fact that there is a surplus quota for the enrollment of international students in South Korean universities, we somehow struggle to tap into that potential. On one side, we can see that South Korea wants to sustain its leadership role in innovation, technology, and diversification. On the other hand, we, because of our bureaucratic problems,
failed to tap into that opportunity. Few decades ago, we had signed an agreement with South Korea to send some 10,000 Pakistani laborers there. Somehow, we have only been able to send some 500, not more than that. And that speaks volumes about the bureaucratic hurdles that we face in Pakistan. And that is one reason that CAPS was established, that keeping in view these bureaucratic procedures and hurdles in Pakistan, we need to have some platforms where we can connect the universities in South Korea with the universities in Pakistan. That is why we are lucky to have with us our partner universities who would be coming and joining us for next 3 days with the Tongwon University. And before I conclude, I would just like to mention here that Tongwon University, despite multitude of challenges, have made it to Pakistan. There have been travel advisories issued by the Foreign Office of Korea, but credit goes to the president of Tongwon University, Shahzad Saab and Nabia, who have taken the risk to travel to West Asia despite the ongoing tensions between Iran and Israel. And that speaks volumes about the seriousness that Tongwon University attaches to Pakistan. So to conclude, I would say that Pakistan brings human and natural resources. South Korea brings economic expertise and technological advancement. And together, if we pool in these resources, the prospect for win-win cooperation for both Pakistan and South Korea, it's not just real, it's very bright. I look forward to a very interactive and engaging commitments with the Tongwon universities and our Pakistani partners during next 3 days. And I'm sure the students, almost 500 registrations we have from the students, they will benefit immensely from this opportunity. I wish you good luck. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Khurram, and you have rightly pointed out, and thank you for setting the tone of the seminar. I would like to also mention the other two universities who have been, they are joining us online today for this important expo. Alongside Tongwon University, which is physically present here, Gashon University and Wakwang University. These are the two South Korean universities who are joining us virtually as well. Now, the person whom I will be calling to share his remarks has been very instrumental in envisioning this KPEC in one of the seminars of CAPS. I am referring to His Excellency Moazzam, Ambassador Moazzam, who is currently heading the mission of Pakistan in South Korea. Due to his personal efforts, this expo and other activities and engagements with the South Korea has increased exponentially, and he has been, and his team, including Asif Saab and others, has been very dedicated towards this effort. May I please request His Excellency Syed Moazzam Shah, who is Pakistan's ambassador to Republic of Korea. Before assuming charge in Seoul, Mr. Shah served as Consul General in Melbourne, Australia. He has specialized in Russian language and culture and is a graduate of the Asia Pacific Center for Security Studies in USA. Sir, the floor is yours. May I please request our team to please. Thank you, sir. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Khurram Iqbal Sahab, President of Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies, Anis Ahmad Sahab, and my very dear friend Dr. Jongin, President of Tongwon University, and distinguished participants. Assalamu alaikum and Annyeong Hashimika. Before I begin my formal remarks, I must commend the President of Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies for making a fantastic speech and containing some very valid points. And Dr. Khurram Iqbal Sahab, please be assured that I entirely agree with your vision and your efforts, and we will always remain available to support your work
of whatever the things you're doing to connect Pakistan with Korean education system. Uh, hence, on behalf of the Embassy of Pakistan in Seoul, it is an honor for me to address the inaugural session of Pakistan Republic of Korea Educational Corridor Expo 2026. I'm also very pleased to attend second such initiative organized by the consortium after the seminar on expanding cultural and educational connectivity between Pakistan and South Korea held on 29 January this year. Distinguished participants, Pakistan and Republic of Korea have enjoyed cordial relations since establishment of diplomatic relations in 1983. These relations have seen substantial progress in recent past. Pakistan and the Republic of Korea have established a range of institutional mechanisms for bilateral consultations in different fields, including bilateral political consultations, a joint trade committee, the Joint Defense Committee on Logistics and Procurement, Korea-Pakistan Parliamentary Friendship Group at the level of National Assembly, and dialogue on climate change. We are currently negotiating a comprehensive economic partnership agreement between Pakistan and Korea. The interest to conclude the agreement at the earliest reflects Korea's whole of economy approach in engaging Pakistan's economy and is expected to boost productivity gains, trade as well as investment for both countries. Economic cooperation forms the bedrock of the bilateral relationship. Pakistan is South Korea's 62nd largest importing and 53rd exporting partner. During the year 2025, Pakistan Republic of Korea bilateral trade volume stood at about 1.57 billion US dollars. Korean investment in Pakistan, which was started by Daewoo in the 1990s, has since expanded to a number of sectors, including automobiles, hydropower, mobile manufacturing, and confectionery, etc. There is a regular exchange of trade delegations between the two countries, especially in the fields of manufacturing, health, engineering, minerals, seafood, and agriculture. Korea has been extending its overseas development assistance programs to Pakistan since 1991, and so far, a total of 9 projects with a total budget outlay of more than $700 million have been supported by the Economic Development Cooperation Fund of Korea. These projects cover infrastructure development, such as highways, hydropower projects, hospitals, IT park, etc. Both countries also actively participate in each other's defense exhibitions every year. Foreign study tours from the National Defense University, National School of Public Policy, Naval War College, and Air War College from Pakistan also visit Korea every year. Distinguished ladies and gentlemen, giving this brief overview is important because cooperation in the field of education is directly connected to a stable foundation based on cordial bilateral political, trade, and defense partnerships. South Korea's education vision, as explained by the Honourable President Capes, for international students is driven by the Study Korea 300K, which aims to attract 300,000 international students by next year to become a top 10 global study destination. Key strategies of this vision include expanded scholarships, eased visa restrictions, increased English medium programs, and enhanced job-seeking pathways, especially targeting talent in high-tech fields to counter demographic declines. Accordingly, Korea has become an attractive destination for students, researchers, and professionals from all over Pakistan. As of today, around 3,000 Pakistani students and scholars, which includes 2,600 students and 400 researchers, are currently studying or undertaking research in different universities in South Korea. Most of them are enrolled in the fields of science, information technology, and engineering. Several MOUs have already been signed with various universities of Korea by Pakistani universities, including the University of Veterinary and Animal Sciences of Lahore, NUST,
Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences, and the Higher Education Commission of Pakistan. Previously, my embassy had facilitated free of charge online Korean language classes for students from three universities in Balochistan, BUTEMS Quetta, BUET Khozdar, and GIT Gwadar for over 1 year from January 2023 to February 2024. We are currently finalizing a MOU between Pakistan's Higher Education Commission and one of Korea's top universities, commonly known as SKKU. A three-member HEC delegation is visiting Seoul next month to sign the MOU. Under the Korea International Cooperation Agency, KPEC scholarships, Pakistan is availing scholarships without fail under the G2G as well as private tracks. For instance, there are 16 master students and 2 PhD scholars availing KPEC scholarships. On the private track, currently 2 students are availing this scholarship. Pakistan's top performing students also avail Global Korea scholarships known as GKS. I am very pleased to inform that compared to 26 students in 2024, we welcomed 88 students availing GKS last year. Distinguished participants and guests, I am pleased to inform that since my arrival here last year, the embassy in Seoul is working hard on an embassy-led initiative to establish a knowledge corridor between Pakistan and Republic of Korea. The initiative includes upscaling of skills of unskilled workers present in Korea with technical and vocational education. For this, we have reached an agreement with the Tongwon University, which is a skill development university. The idea is to encourage the unskilled workers, Pakistani labor, to graduate them to skilled workers category through education. The Tongwon University is offering subsidized tuition for Pakistani workers. This program is envisioned to graduate 200 to 300 unskilled workers to skilled workers annually. In addition to this, 80 students have been granted admission on scholarship basis by the same university. Out of these 80, 65 students have enrolled in 2-year skill development degree programs. 34 of these students are female. Resultantly, I had the pleasure of personally welcoming 25 students from Pakistan to avail scholarships arranged by the embassy and offered by Tongwon University in March. These students include 15 female students. To overcome a key stumbling block for Pakistani students seeking higher education in Korea, the embassy in Seoul, in collaboration with the government of Punjab, has engaged various Korean universities to open Korean language institutes in Pakistan. Resultantly, in the last 8 months, 4 Korean language centers have been established in Lahore within the premises of MEO College, Queen's Mary College, Government Graduate Science College, and the University of Home Economics. So far, 201 students have benefited from the language centers. It is also heartening to see the efforts put in by the Tongwon University in establishing its first international campus in Lahore in collaboration with the Department of Education of the Punjab government. Ladies and gentlemen, I am pleased to inform that to foster links with Pakistani students and facilitate them, the embassy has established a Pakistani Students and Scholars Association. The association's primary objective is to facilitate Pakistani students and scholars in Korea. This includes sharing vital information, keeping its members updated on local rules and policies, and providing assistance in times of need. This support system is crucial in helping them navigate the challenges of living and studying in Korea. I would like to conclude by commending the commitment of the Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies in playing an important role in expanding opportunities for Pakistani youth, as well as strengthening people-to-people ties
with the Republic of Korea. Thank you so much for your time. Sir, thank you very much for your very insightful remarks and encouraging as well. I, from this stage in front of the President Tongwon University and President CAPS, assure you that CAPS would definitely be happy, and it will be our honor to facilitate any such initiative under your guidance for the betterment of our students, for our future, those who have come today in a very large numbers and showing their interest for this initiative. Here I would also like to mention our partner universities who have been very forthcoming vis-a-vis this idea. I especially thanks Riphaah University, NUST, NAML, Federal Urdu University, Bahria, AIOU, and also MAO College, which has, whose representative has traveled all the way from Lahore for joining us here. And we do have representation and OREX from all these universities, and we are thankful to them. Now, moving further, it is my distinguished privilege to call upon such a personality who has not just spent his whole life just delivering lectures, rather educating and rather mentoring students directly and indirectly. I am very much thankful to Professor Dr. Anis Ahmad, who has joined us for this important initiative. Professor Saab is a distinguished social scientist of international repute and the founding Vice Chancellor of Riphaah International University. He earned his PhD from Temple University, USA, and has held several prestigious academic leadership roles nationally and internationally. He previously served as Vice President of International Islamic University, Islamabad, and as the founding Dean of the Faculty of Revealed Knowledge and Human Sciences at the International Islamic University, Malaysia. Professor Dr. Ahmad is a former President and Secretary General of Association of Muslim Social Scientists, USA, and a Fellow of University of Sands, Malaysia, a prolific scholar. He writes extensively on contemporary social, political dynamics, and many more. I'm just cutting short. Sir, may I please request you to please come and address the gathering. Thank you very much, sir. Please welcome Professor Dr. Anis. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala khatim al-anbiya. Honourable Professor Choi, President Tongwon University, Korea, dear Professor Khurram, Excellencies, Honourable Ambassador of Pakistan in Korea, faculty members, students, it's always an honor and pleasure to interact with young people. I feel rejuvenated when I see young faces. That's one of the secrets of my being so active throughout my life. I congratulate the chairman of Consortium, Dr. Khurram, for this initiative, and I'm so glad to see that with his dynamic personality, we have been able to see this successful event. I'm attending it for the first time, and I hope many more occasions will come when we will meet together. Knowledge has no limits, and particularly East has been always a source of knowledge. East has remained shrouded in anxiety and curiosity for the West, and quite often they thought East is very exotic, and therefore they established institutes to understand Oriental culture and society. But later on, the rise of global colonialism led
to an economic, political, and cultural captivity of the colonizers at global level. Definitely, when I went to America and many others went to America or Europe, attraction was that they are more advanced in knowledge. And if you go there and get education, you have better opportunities. But I think one factor which we quite often don't highlight is, unfortunately, there has been a colonialist mentality and psychology which has compelled people to look west and not east. Because east did not colonize them, but west colonized them. And therefore, if you talk in fluent English, if you wear English perfume, and if you interact with them, you have been regarded a modern, enlightened person. But East has always been neglected and disregarded by the West, assuming these are less developed, behind in culture, primitive people. East and Africa has always been in the mind of West as less than human beings. But Alhamdulillah, during past few decades, Eastern universities and many countries have proven they can develop faster than the so-called Western countries. What West has taken for centuries to grow, Korea and many other countries have taken decades to match that kind of development. But mind you, when you say development, is it just a matter of economic indexes, a matter of HDIs, a matter of how many nuclear warheads you have, or is something more than that? When you go to Korea or China or anywhere else, is it just to get a certification that you can be a good technician, someone which can compete with AI, or someone who has certain skills which are needed in the market? Or education means something more? Unfortunately, under the impact of colonial education system, Pakistan and many such countries which are colonized have never gone beyond knowledge given by textbooks prescribed in a curriculum. And many of the teachers never go beyond that. As I said, knowledge has no limits. And therefore, openings such as going to Korea or elsewhere is to be grabbed and not lost. Secondly, when you interact with different culture, you realize beauty of variety, and at the same time, you look into your own personality and find out what is good in you and what is good in others. This interaction makes you grow. And when you grow, you help humanity in development. Don't forget that with all secularization of the world, is still Eastern culture has been resilient and has been able to maintain some values. I have not seen yet any Japanese friend who will not bow down when he welcomes you. I have not seen any Korean friend who will not entertain you with the Eastern politeness and kindness. On the other hand,
I have spent quite good of my life teaching in America, in China, in Malaysia and elsewhere. And I've not found that kind of warmth, openness and frankness. Therefore, opening corridors of knowledge, particularly with the so-called East. By the way, who called us East? The colonizer. They drew the map to decide what is Southeast, what is East, what's Middle East, and what is the developed country. And we accepted that intellectually and historically. Knowledge has no East and West. Knowledge is global. And therefore, we should come out of these hang-ups, these so-called social constructs in which we are born. One last thing I want to share with you. We are living in an age of AI. And every single university in Korea or in USA or Pakistan, anywhere, has now suddenly started modifying its courses, syllabi, and trying to insert AI even when it's not needed there. We are not fully aware yet of a phenomena which is yet in developmental stage. And therefore, don't make fast judgments. Don't think if globally people are talking about it, then it is the key to everything. It can definitely create better environment in productivity. But the cognitive aspect that remains the human beings cannot be replaced by the so-called AI. And that's not what I am saying. That's what is said by the experts in the so-called United States of America. There have been demonstrations in major cities of America against introduction of AI in various institutions. We never keep ourselves abreast with knowledge because we are blind followers. We never try to understand things as they are, but we look from the spectacles of a colonized people. It's not too long, hardly 2 decades, when AI was talked about, and then it emerged. Within these 2 decades, a serious condemnation of AI has taken place in America, while we are crazy after AI. There are some institutions in Australia which have tried to reduce use of AI to only those areas where you have non-cognitive activities. Researches by psychologists in North America has proven till now that use of AI has seriously harmed cognitive process of young people. And parents have come out in New York, in Arizona, in Texas, in public demonstrations demanding we want notebook and pencil back and take back this laptop and mobile from us. This does not mean we condemn it, no. Simply means AI should be used and placed in its proper place. Not that it comes as solution for everything. And particularly because of AI, layovers have been taking place in many parts of the world. That is highly unjustified. AI cannot replace human decision. It can only assist and help in tabulation, in making things fast. At the same time, some
experts in biotechnology, again Americans, have come up with warnings that if you allow this to continue in the hands of a few, mainly two major stakeholders in America who are racing to capture the market, then you are giving the future of humanity in the hands of two entrepreneurs. And they will decide who should survive in the world and who should perish. And that's a very serious ethical issue, security issue, issue of humanity, and should not be set aside because we are charmed and influenced by the slogans used by AI. We must know about it, learn about it. We should not become servant to it. All I can say to young people is that you should keep your minds open, be critical, don't get influenced with any wind that is around. Things come and go, but you have to decide what kind of future you want to create. A future just for yourself, just for your family, just for your country, or for the global community. You can make a global impact if you have sound foundations. If you are raised and brought up on Wikipedia and a few outlets of information, you can never have roots, never have knowledge, never have growth. You shall have to again come back to conventional book knowledge. Without that, you cannot proceed. You cannot disregard printed book because of e-books and your screen. You are not aware of what harm you are doing to your retina, irreversible harm done with the screen. And does not mean don't use it. No, use it, but don't get hooked to it. Don't develop addiction to social media and the screen. Come out of that, spend some time in thinking seriously about purpose of life. Is it just to enjoy or to make this world a peaceful place, respectable place, dignified place? And that can only be done when we honor our own ethical values. Our ethical values tell us how we behave with our own self and others. Education essentially is that behavior. If that behavior is observed, then definitely we will succeed. But if we simply imitate the East or the West, we stand nowhere. I hope you will be thinking seriously about your future, and may Allah bless you all and make you succeed in achieving your objectives. Thank you very much. Sir, thank you very much for the words of wisdom, as always. It is really a privilege to listen to you. Proceeding further, join me to welcome our Federal Minister of Education, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui Saab, who has joined us as a chief guest of this program. Sir, thank you very much for honoring us. May I now please request the guest of honor who has traveled all from South Korea for this particular initiative and who has gone to such an extent that the visa hurdles that our students face, they have been facilitated by Tongwon University, not just as sending an invitation letter, but also going to ready to take the risk to go to the courts for assuring that the visas are being given and awarded to the students. Sir, my
references to the president of the Tongwon University, Dr. Choi, who has made it for this particular initiative. Dr. Choi has been a distinguished professor and distinguished scholar at South Korea, and he is currently heading the Tongwon University and is now also trying to establish the global campus, first global campus of the Tongwon University in Pakistan, and his contribution towards education, towards, I would rather say, mentoring students towards Pakistan is immense. We are really thankful to you, sir, and also may I request Professor Dr. Shehzad Saab to please come and be his interpreter as he would be speaking in Korea. Sir, please. 안녕하십니까. I love Pakistan. पाकिस्तानी ज़बान इनको नहीं आती तो इसलिए कोरियन में बात करेंगे. 먼저 이 자리를 마련해 주신 장관님께 감사의 말씀드립니다. मैं अपने दिल की अता गहराइयों से जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें इज़्ज़त बख्शी. 그리고 주한 파키스탄 대사관님과 아시프 국방무관님께도 감사의 말씀을 드립니다. और जनाब मोअज़्ज़म साहब जिन्होंने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया था, जो इस वक्त एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी साउथ कोरिया में. 또 이 자리에 오신 대학의 총장님과 교수님들, 관계자분들께 감사의 말씀을 드립니다. और मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर टाइम दिया. 특별히 라오르에서 MAO 대학 총장님과 라자크 한국어 선생님 오셔서 너무 감사했습니다. और लाहौर से हमारे गेस्ट मैडम आलिया और रज़ाक साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया. 무엇보다도 한국어에 관심을 갖고 또 동원대학에 관심을 갖고 이 자리에 참석해 주신 학생 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. और सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका तोंगवन यूनिवर्सिटी वेट कर रही है. 저는 이번이 파키스탄 방문이 6번째입니다. इस वक्त मेरा पाकिस्तान में जो ट्रैवल है वो छठी बार ये पाकिस्तान आए. 처음에 주한 파키스탄 아시프 국방무관님께서 파키스탄에 한국어학당을 설치하자라는 제안을 받고 처음에는 많이 망설였습니다. एक साल पहले पाकिस्तान एम्बेसी से एक रिक्वेस्ट आई थी कि कोरियन लैंग्वेज सेंटर पाकिस्तान में बनाने. 모두 주변에서 파키스탄은 너무 멀고 기후 조건도 안 좋고 상당히 모든 정치적 상황 모두 부정적이었습니다. पाकिस्तान के बारे में हमने बहुत नेगेटिव सुना था. पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, बहुत दूर है और पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं, तो एकदम हम जो है ना थोड़े से घबराए हुए थे. 그러나 이제 주한 파키스탄 대사님과 아시프 국방무관님 또 교육부 장관님들께서 지속적인 관심과 열정을 가져주셔서 파키스탄에 오게 됐습니다. जब मिनिस्टर साहब ने और हमें एम्बेसी के स्टाफ ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया तो हम यहाँ आए, तो एकदम सरप्राइज. 파키스탄에 오니까 주변 साराम들이 부정적인 얘기는 다 잘못된 것이었습니다. जितने भी लोग थे जो पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव बातें करते थे, यहाँ आकर हमें पता लग गया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है. 저는 처음에 동원대학을 위해서 파키스탄에 왔습니다. शुरू में जो है ये दोंगवन यूनिवर्सिटी की वजह से पाकिस्तान आए थे. 지금은 파키스탄을 위해서 파키스탄에 오고 있습니다. अभी ये पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान में आए. 땡큐. 저는 40년간
직업 교육을 담당한 전문대학에 재직을 했습니다. 40 साल इनका एजुकेशन एक्सपीरियंस है। 직업 교육에 관한 한 저는 자신 있다고 생각합니다. टेक्निकल साइड में इनका जो है 40 साल का एक्सपीरियंस है। 동원대학에는 현재 30년간 개교 때부터 지금까지 재직 중에 있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी को इस वक्त साउथ कोरिया में 30 साल हुए हैं और ये फाउंडर मेंबर्स में से हैं दोंगवन यूनिवर्सिटी के। 제가 가지고 있는 모든 역량을 우리 파키스탄 학생을 위해서 모든 역량을 쏟아붓겠습니다. ये कहते हैं कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं ये चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान में इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, तो मैं अपनी सारी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान में उसको सर्व करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बच्चे साउथ कोरिया में जाएँ। 그렇게 된 동기는 감사합니다. 땡큐. 라오르에서 4개 국립대학을 총괄하시는 MAU 대학 총장님께서 보여주신 헌신과 애국심 때문입니다. ये सारा कुछ पाकिस्तान में इतना प्यार, लाहौर में जो 4 एकेडमियाँ बनाई हैं वहाँ बच्चों का प्यार और यहाँ पर मैडम आलिया का प्यार, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्यार की वजह से मैं जो है ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा साउथ कोरिया में जाएं। 아마도 여기 오신 총장님들이나 교수님들도 다 같은 생각이라고 생각합니다. मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जगह मुझे इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से प्यार मिलेगा और यहाँ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साउथ कोरिया के लिए तैयार करेंगे। 저는 60년 초에 태어나서 한국의 산업 발전, 농경사에서 산업 발전으로 진행되는 모든 상황을 제가 경험했습니다. ये कहते इनकी उम्र जो है वो 1960s में इनकी पैदाइश है, तो 1960s से अभी तक कोरिया को उन्होंने ज़मीन से आसमान तक जाते हुए देखा। 한국의 산업화는 전문대학, 직업교육이 아주 중요한 역할을 했습니다. कोरिया जो है वो टेक्निकल साइड पे, कोरिया ने तरक्की का जो राज है वो टेक्निकल साइड पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इस पे वर्क किया है। 우리 파키스탄의 학생과 학부모님들의 그 열정만 보아도 파키스탄엔 희망이 있습니다. पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी लोगों में और पाकिस्तानी लोग बहुत मेहनती हैं। 분명히 10년 안에 놀라운 변화가 일어날 것이라고 생각합니다. मैं अपने एक्सपीरियंस के बेहाफ पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान जो है एकदम पूरी दुनिया को सरप्राइज़ करेगा। पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। 그 뒤에는 우리 장관님과 모든 교수님들, 총장님들이 이 교육 정책을 해외로 이렇게 기술을 배우고자 하는 그 의지가 강하다고 느꼈기 때문입니다. वो अभी ये बात कर रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए कि मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं और बाहर जाके स्टडी करें। तो जितनी बाहर जाकर स्टडी करेंगे तो वो उतना ही अपने मुल्क में रेमिटेंस भी भेजेंगे और उनका मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। 동원대학에는 현재 985명의 유학생들이 있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी में इस वक्त 958 स्टूडेंट जो है वो ज़ेर तालीम है। 그들은 15개 국가에서 왔습니다. 15 कंट्रीज से लोग मौजूद हैं वहाँ पर। 그 중에 파키스탄 학생이 지난번에 22명이 비자를 받고 동원대학에 3월 달에 입학했습니다. जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं 22 लोगों ने पिछले फरवरी में वहाँ साउथ कोरिया में वीज़ा लेकर दाखिल हुए हैं। 저는 그 22명이 동원대학에 입학하는 그 과정에 같이 동참해서 일을 해봤습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तानी 25 स्टूडेंट जो ज़ेर तालीम है, मैं उनके साथ रोज़ाना उनसे मुलाकात भी होती है। 우리 파키스탄의 교육부, 주한 파키스탄 대사관, MAO 대학 총장님 모든 분들이 합심해서 이뤄낸 성과입니다. ये जितने भी बच्चे वहाँ पर पहुँचे हैं उसमें मेरी अपनी कोशिश नहीं थी, इसमें पाकिस्तान मिनिस्टर साहब की भी कोशिश थी, MAO की जो यहाँ मैडम मौजूद हैं उनकी भी कोशिश थी, सारे पाकिस्तान की कोशिश थी और ख़ास तौर पर उन बच्चों की मेहनत भी थी। 이 말씀은 비자를 받기 위해서 노력을 하는 최종 목표가 비자를 받는 건데 그 노력이 없이는 비자를 받을 수 없었다는 말입니다. ये बात इन्होंने इसलिए की है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल प्रोसेस यही है कि एम्बेसडर यहाँ पर जो मौजूद हैं, कोरियन एम्बेसी जो मौजूद है, वो वीज़ा प्रोसेस बहुत जो है ना स्लो करती है, वीज़ा नहीं लगाती। 제가
한국의 다른 대학 관계자들, 유학 국제교련 관계자들하고 대화를 해봤습니다. 파키스탄에서 비자를 받고 들어온 학생이 한 명도 없었습니다. पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब कोरिया में इन्होंने सर्वे किया तो वहाँ पर यूनिवर्सिटियों ने यही बताया कि जितने भी बच्चे एडमिशन तो हो जाता है लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। 한국어를 아무리 잘해도 비자가 안 나오면 아무 소용이 없는 거죠. आप लोग जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी अच्छी कोरियन लैंग्वेज सीख लें, अगर आपका वीज़ा नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या। 이슬라마바드에 있는 한국 대사관에 방문해서 계속 협의하고 논의해서 이뤄낸 결과가 미흡하지만 어쨌든 물꼬는 터졌다라고 생각합니다. इस्लामाबाद में हमने जाकर फ़ाइट की और फ़ाइट करने के बाद कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 25 वीज़े एक साथ लगे हैं। उसमें मिनिस्टर साहब खालिद साहब का भी बहुत मेहरबानी थी कि जो इन्होंने भी ऑन बोर्ड लिया यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को, और वीज़े उसमें जो है फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में 25 वीज़े एक साथ अप्रूव हुए हैं। 감사합니다. 15개 국가 985명 중에 파키스탄 학생들이 가장 성실하고 가장 공부도 열정이 있는 학생들로 판단이 됩니다. 1000 के करीब दोंगवन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इस वक्त ज़ेर तालीम है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। 저는 라오르에 있는 MAU 대학을 비롯해서 4개 대학 학생들을 일일이 다 찾아봤습니다. जितने भी बच्चे लाहौर में जो इनके इंस्टीट्यूट चल रही हैं 4 जगह पर, वहाँ पर ये एक एक बच्चे से उनकी मुलाकात भी हुई, उनके इंटरव्यूज़ भी उन्होंने लिए। 그 학생들의 눈빛과 그 학부모님들의 눈빛을 잊을 수가 없습니다. कहते हैं मैं जो है ना उन बच्चों की आंखों में जो चमक है और उनके वालिदैन की जो चमक है मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उन सारे बच्चों को मैं साउथ कोरिया लाजमी लेके जाऊँगा। 반드시 우리 비자가 잘 나올 수 있도록 저희도 계속해서 노력하겠습니다. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। 여기 이슬라마바드에 이제 장관님이나 총장님들께서도 관심 갖고 도와주시면 그 학생들이 다 비자를 받고 동원대학에 갈 수 있습니다. आप लोगों से मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, मिनिस्टर साहब से भी प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ मिलकर सारी चीज़ें करेंगे तो यहाँ इस्लामाबाद के बच्चों को भी वीज़े में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। 동원대학에 그 학생들이 오면 그들의 희망과 꿈을 이룰 수 있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी में आप जितने भी अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उनके जो भी ख्वाब हैं वो लाजमी सच होंगे। 저희 동원대학이 그리고 제가 그들을 응원하고 도와주겠습니다. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उन बच्चों की हेल्प करने के लिए। 이 자리에 우리 학생들을 위한 자리입니다. ये जो जगह है इस वक्त सारे बच्चों के लिए 우리 학생들을 위해서 이렇게 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Thank you. शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Choi and Dr. Shehzad, for making us understand his deep emotions and his kind words, kind gestures towards Pakistan. Before I call the chief guest to conclude this program, I would like to thank the media personnel, our partner Arcadia, and other universities and institutions who have worked together, and not to forget the CAP's core research team and the office which has worked day and night to make it successful. I may also mention the volunteers who have registered themselves for this expo, and thank you very much for being disciplined and being organizing this event professionally. May I please now request our chief guest, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, who is one of the Pakistan's most experienced and distinguished public servants, currently serving as the Federal Minister for Education and Professional Training, a medical doctor by profession. He graduated from Jinnah Sindh Medical University in 1989, before my birth, and entered at the National Legislature just a year later. Beginning a decade-long career of public leadership and legislative services with a political career,
Dr. Siddiqui has served as a member of the National Assembly from multiple constituencies across Hyderabad and Karachi, and has held federal ministerial portfolios including industries and production and information technology and telecommunication. As convener of MQM Pakistan, he is leading political figure representing urban Sindh at the highest levels of the government, federal government. In his current role at the Ministry of Education, Dr. Siddiqui has made quality education for every Pakistani child a national priority. He is spearheading the federal non-formal education policy 2025, built around the ambitious goal of achieving zero out-of-school children in Pakistan. He has championed data-driven policy making, skill-based education, and robust collaboration between federal and provincial institutions to bridge Pakistan's education gap. And his presence today here demonstrates and validates his portfolio. Thank you very much, sir, again for coming. May I please request you to please address the youth. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guest, distinguished Professor Choi, Professor Anis, Professor Dr. Maqbool, ladies and gentlemen, and especially our students, Assalamu alaikum and good morning. Thank you very much for inviting me here, and thank you very much for giving me the opportunity to share my views with you. I feel honored. It is a matter of great pride, privilege, and pleasure for me. Translating and interpreting the national language of Korea into a national language of Pakistan is a great initiative. I know that my dear friend from Korea can speak fluent English, but he prefers his national language, and I don't see any reason for me to speak in any other language than the national language of Pakistan. Will you allow me to? Say, please, sir. खातिन हज़रात, आज का पाकिस्तान जो सन 47 में मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, उसके आदाद व शुमार देखें, आबादी देखें, वसाइल देखें, इस खित्ते का कोई मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। शायद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो मगरबी पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान है, उसके आदाद शुमार को अलग रखा जाए तो उस वक्त हिंदुस्तान में इस पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा गुर्बत थी। हमारे पड़ोस का दूसरा मुल्क चाइना हमसे दिहाइयों पीछे था। कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया का तस्करा तक नहीं था। जापान एटम बम की तबाही से और जर्मनी दूसरी जंग के अजीम की शिकस्त के बाद तो एक हम थे जिनके पास एक नज़रिए और एक इरादे और इख्तियार की वजह से अपने इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल था। आज कोरिया एक मिसाल बन के हमारे सामने खड़ा है, और मैं समझता हूँ कि इस बदलती हुई, तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, जिसके बारे में कि आज का एआई का भी जदीद तरीन कल के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि शायद आने वाले 30-35 सालों बाद दुनिया इतनी तब्दील हो जाएगी कि उन अक़वाम ने, अफराद ने, जिन्होंने उस तब्दील होती हुई दुनिया के साथ ख़ुद को तब्दील करने का इरादा और इख्तियार ना रखा हो, तो डर है कि दुनिया में ऐसे तकरीबन 1 अरब लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे। हमारे पड़ोस के 2 आबादी के जो जाइंट्स थे, आज टेक्नोलॉजी की जाइंट है, उन्होंने बता दिया कि आबादी लायबिलिटी नहीं होती, उसको एसेट भी बनाया जा सकता है।
और आज की बदलती हुई दुनिया में जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ अब एजिंग नेशन के तौर पे पहचानी जाती हैं, जहाँ आबादी कम हो रही है लेकिन तरक्की की रफ्तार उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तान के 15 करोड़ नौजवान ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, बल्कि जदीद दुनिया में आबादी की कमी के बहरान का भी एक बहुत बड़ा हल है। आज दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों ने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी है। आज इल्म नाफे की ज़रूरत का एहसास सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें, और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, हम मुसलमानों को बहुत कुछ नहीं करना है, हमें 100 साल तक इस जदीद दुनिया का बड़ी ईमानदारी के साथ नकल ही तो करनी है। और ये ईमानदारी का लफ्ज़ ही शायद सबसे बड़ा अहम हमारे लिए है। मैं तो मुल्क के अंदर कोई बड़ी माशी बहरान को नहीं देखता हूँ, मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा बहरान नियतों को देखता हूँ। पाकिस्तान में असल बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें खौफ है कि कहीं कोई फाइनेंशियल बैंकरप्सी ना हो जाए, हमें अपनी मॉरल बैंकरप्सी की तरफ भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बदलती हुई दुनिया ने हमें फिर मौके दिए हैं, और आपके ये 15 करोड़ नौजवान जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इस चैलेंज को लेने के लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमें भी अब उसी तरह रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। आज का ये कोरिया पाकिस्तान एजुकेशन कॉरिडोर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ी कोशिश है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि हमें आगे बढ़कर इस पे काम करने की ज़रूरत है। कोरिया एक मिसाल है, इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिसे मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया था, उसे हम मंडी न बनने दें। ये पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के लिए बनाया गया था, और इसका वाहिद रास्ता अब भी इल्म है, टेक्नोलॉजी है और शऊरी कोशिशें हैं। तो ये कोरिया, जापान, जर्मनी, रशिया भी और शायद इटली भी इस वक्त शदीद आबादी की कमी के बहरान का शिकार है। हुकूमत को भी, वज़ारत तालीम को भी, ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री को भी, वज़ारत ख़जाना को भी, हम सब को मिलकर इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए एक बड़ी मरबूत किस्म की कोशिश की ज़रूरत है। और इस मौके पे पाकिस्तान का वो डायस्पोरा जो बाहर बैठा है, जिसने जदीद दुनिया देख ली है, महज़ूब दुनिया देख ली है, तरक्की याफ्ता माशरे देख लिए हैं, उनको भी हमारे साथ मिलकर इस कौम को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, दुनिया के साथ हम आहंग करने के लिए ज़रूर शरीक होना चाहिए। मैं अपने तमाम असतज़ा से, प्रोफेसर से, रिसर्चर से भी कहूँगा कि आइए मिलकर एक इमरजेंसी की इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए मिल बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि आज का पाकिस्तान, उसकी मईशत रेमिटेंस पे खड़ी है। तो जो आपको मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस मिलती है, वो उम्र के साथ और तजर्बे के साथ कम होती चली जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के प्रोग्राम के बाद वो क्वालिटी रेमिटेंस होगी जिसका आप बंदोबस्त करेंगे, जो हर तजर्बे के साथ, हर गुजरते हुए दिन के साथ उसके मयार में और मकदार में, दोनों में फ़र्क पड़ता चला जाएगा। आइए अल्लाह की जानिब से दिए गए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। एंड आई एम थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब फॉर योर इनिशिएटिव एंड योर, I think this initiative will benefit 150 million Pakistani youth. This is a huge youth bulge, and it will be asset for Pakistan and whole of the nation. Thank you very much.
सर थैंक यू वेरी मच. और उर्दू में मेरे ख्याल में ज़्यादा समझ आई होगी लोगों को. सर, we are very proud of our youth, and let us have a round of applause for you people, please. Before moving forward, we now have a very special segment of today's program, the launch of KPEC's publication. I am honored and privileged and pleased to announce the launching of Pakistan-South Korea relations, reflecting on the past and charting the future, titled book, in which the distinguished professors and the academicians from the both sides, from South Korea and Pakistan, they will be contributing chapters in different, about different dynamics of the relationship. This is one of its kind in a decades, I would rather say, in Pakistan-South Korea relations. So this important volume would be published soon and will be available for the in the market. Before we proceed, may I please request our worthy chief guest, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui Saab, Professor Dr. Anees Saab, to please witness the MOU signing ceremony between Consortium for Asia Pacific and Eurasian Studies and Tongwon University with the partner Arcadia. May I please request you to please witness the historic moment. The representative of the Arcadia, Mr. Usman, will be here for signing the dossier, please. This is definitely a historic moment when we are signing this initiative with Tongwon University, and it will definitely not only benefit the students, but also the faculty, the researchers, and the skilled workers that we will be producing, inshallah, in coming times. May this MOU be implemented and letter and spirit. We congratulate KPEC, Tongwon University and Arcadia for signing this historic MOU. May I please request Dr. Anees, Professor Dr. Anees as well to please step forward for a photograph. Thank you very much, sir. Thank you. Now, for students, I'll request them that they should be seated here, as we do have an informational video about Tongwon University which will be played here, and I would request the Dr. Anees. Okay, we are having a MOU still signing ceremony of the MOU between Arcadia and Tongwon University. I congratulate both of the institutions. Sir, please. If you could. Thank you very much. Thank you. May I now please request our chief guest, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui Saab,
to please come forward and present the souvenirs to our worthy guests. May I please request Professor Dr. Anis Ahmed for receiving his souvenir from worthy minister. Organizing team, may I please request you to please provide the souvenirs. Thank you. Professor Dr. Anis Ahmed. Sir, thank you very much for coming and honoring us, sir. May I now please request President Tongwon University, Dr. Choi, to receive his souvenir as a token of respect from CAPS. May I now please request Miss Nabia from South Korea Tongwon University International Office to receive her souvenir. And the last but not the least, and a very important one, Dr. Shehzad, who has been very instrumental in forging the relationship between South Korea and Pakistan since 2 decades. Sir, we highly commend your efforts, and we are very much obliged for your facilitation with this whole of the event and the initiative. I would, before proceeding for the group photo, I would like to thank online guests, all the faculty members who have joined us, and our partner institutions and CAP specifically. Students, please be seated and have the Tongwon University's video. You can just have an idea about the Tongwon University and hold this initiative. And I would request our worthy chief guest, our partners, and our faculty members to please come with us for a photograph. Thank you very much. Hope you would be enjoying the expo. Thank you. The world expects us to provide world-changing innovation, education that merges practicality and expertise, and to be a university that creates a better future for us. Tongwon University has its own way of meeting the world's expectations, encouraging talented students to dream bigger and to realize those dreams. Tongwon University makes it happen. For more than 20 years, we have met educational demands of our society, fostering talented students through programs that lead to jobs. In these and other ways, we are fostering creative and proactive technicians. Our programs are recognized as being highly specialized, and we offer only world-class programs to all of our students.
Because of this, we are now finding ourselves part of a larger world. As the gap between people and technology grows smaller, Tongwon University is increasingly focusing on interdisciplinary education so that our students gain both expertise and practical experience during their time here. We preserve the essence of the university experience, from admission to employment, while providing student-focused professional programs. Strengthening industry-university cooperation, we secure the dynamic forces for the future. We provide a variety of international programs that open doors for students and help them become globally minded. As we look toward the world is looking to our university. Conveniently located in the Seoul Gyeonggi metropolitan area. With a variety of robust scholarships and a student support system, we help our students enjoy a rich campus life. We also offer a variety of programs focused on the local community, which allows the community to grow along with the university. Instead of tailoring our students to jobs, we tailor our vision to our students. Tongwon University is soaring with a great vision. All our efforts and vision will provide our students with chances to advance into a better and greater world. Tongwon University. Beyond ranking among the top 10 private universities in Korea, to being among the top 100 universities in the world, Gachun is making another quantum leap. New time, new step. Gachun University. 지금의 가천대는 길병원을 중심으로 한 메디컬 파워와 특성화 역량들이 통합된 하나의 결집체라고 보시면 됩니다. 그런데 정말 중요한 건 통합된 가치들을 연결한 일이었습니다. 어떻게 하면 초연결 캠퍼스를 만들 수 있을까? 시스템 인프라에 대한 투자가 쉴 새 없이 이루어졌습니다. 가천대에는 뭔가 새로운 게 계속해서 생겨나요. 건물도 그렇지만 강의 프로그램이나 학교 시스템들도 계속해서 새로워지거나 더 편리하게 바뀌어가거든요. 우리에게 필요한 모든 것과 쉽게 연결할 수 있는 학습 환경, 그게 우리 학교의 강점이라 생각합니다. Gachun has been on a path of connection and transformation to become the fastest growing university after the merger. The Gachun Global Campus and Medical Campus have become a model of convergence education by breaking down boundaries between majors and have transformed into a hyper-connected campus with the Gangwon Campus, the starting point of Gachun's leadership education, and the Hawaii Gachun Global Center, the center of Gachun's global education. In this cutting-edge environment, Gachun is now growing as the medical powerhouse with the College of Medical Science, College of Korean Medicine, College of Pharmacy, and College of Nursing. We are also emerging as the software powerhouse at the center of state-of-the-art technologies, including AI and semiconductors. We are taking on a more innovative path to become a global top 100 university
that connects with the world. (10여 년) 전만 해도 가천대가 이 정도로 브랜드 파워를 가질 거라는 건 생각 못했어요. 그런데 가능성을 보여주는 문화는 분명히 있었거든요. 학생들한테 늘 도전하라고 했고, 도전하면 적극적으로 지원을 해줬거든요. 그런 도전의 학풍이 오늘을 있게 한 힘이 아니었을까 생각합니다. 창의성은 다양한 경험에서 나온다고 하잖아요. 그래서인지 가천대에는 학생들한테 새로운 경험을 하게 하는 프로그램이 많아요. 학교 안에서 많은 걸 경험하고 대응하는 법을 습득하게 하는 거죠. 그런 경험 중심 교육이 저희 가천대 특유의 창의적 DNA를 만들었다고 생각해요. Gachon's own special system of prioritizing the adoption of social change to the curriculum. Gachon's talented alumni are equipped with an unparalleled competitive edge. As they grow in the global campus, located near Pangyo Techno Valley, and in the medical campus, linked to the Songdo Medical Complex. As the leader in software engineering education, Gachon leads the students to success with our integrated educational environment. Through the open faculty recruitment system, we have excellent faculty with remarkable research achievements and experiences. Gachon also provides global hands-on educational experiences by offering, for the first time in Korea, departments for AI software and batteries. By encouraging students to achieve their dreams through early employment contracts, Gachon University is leading the way for change in the world by fostering talented individuals in the metaverse. We are opening another door to the future of medicine. Top students are growing into leaders who will change the future of medicine through the medical power of Gachon University, with specializations in neuroscience, cancer, diabetes, and biomedicine. Top students across the nation come to Gachon to conduct a wide range of research. With the infrastructure of Gil Medical Center, one of the top 3 research-oriented hospitals, we are leading global healthcare trends through basic and comprehensive clinical education. We are widening the path and taking on bigger challenges so that our students can dream of a bigger world. 우리가 되려는 건 더 나은 대학이 아니라 독보적인 대학이에요. 그 가능성은 가천대의 연구 역량에서 나옵니다. 한 대학이 반도체 인프라 구축 같은 국가 사업을 독자적으로 주관한다는 건 놀라운 일이에요. 지금까지 성장이 시작에 불과하다는 걸 보여주는 거죠. 네, 지금은 이 지식이나 정보가 누구한테나 공평하게 주어지는 시대잖아요. 그렇게 똑같이 주어진 것들을 연결하고 융합해서 새로운 걸 만들어내는 곳이 바로 플랫폼이고요. 하나의 거대한 성공 플랫폼이 되어가는 가천대학교. 그래서 학생들의 미래가 더 기대됩니다. The new starting point of another quantum leap is the ecosystem of coexistence, where everything converges. We are moving towards the center of healthcare industrialization with our startup ecosystem, which combines industry, school, and students. We are advancing toward our dream of becoming a global top 100 private university. The world-class Songnam Gachon Makerspace, where innovative ideas become startups. The Fabless Academy for empowering leaders of Korea's semiconductor industry. And the Gachon Kokone School, the startup college where all resources converge. We provide an educational model where startups turn into unicorn companies. We are starting a new era of startups where students can pursue their dreams and change the world.
우리가 살아갈 인공지능과 플랫폼 시대는 문턱도 울타리도 없는 것이 특징입니다. 우수한 학생들, 앞선 기업들은 기회가 넘치는 플랫폼 대학을 선택하게 될 것입니다. 우리 가천대학교가 그중 최고의 플랫폼 대학이 되겠습니다. 한계를 넘어 세상을 바꾸는 성공의 플랫폼, 가천대학교가 만들어갑니다. Nothing can stop the wind of change. A student-centered platform that is changing the world. Hyper-innovation. Gachon University. 자랑스러운 80년의 역사 아래 우뚝선 교정의 웅장함 아래 수많은 인재들의 빛나는 성취 아래 그 깊은 뿌리를 지탱해온 것은 무엇일까? 눈부신 도약 뒤엔 보이지 않는 묵묵한 헌신이, 지식의 축적 뒤엔 물질을 넘어 정신을 개벽하고자 했던 치열한 탐구가, 오늘의 영광 뒤에 참된 인간을 향한 지덕경수, 도의 실천에 쉼없는 발걸음이 있었습니다. 지친 세상을 따스하게 어루만져 메마른 곳에 생명의 숨결을 불어넣으려는 재생의세 숭고한 뜻, 인류를 향한 따뜻함으로 빚어낸 흔들림 없는 진실들과 그렇게 세상을 구제하고자 묵묵히 이어온 80년이라는 묵직한 발자취. 그리고 이제 원광대학교라는 이름으로 모든 경계를 허물고 서로의 지혜와 역량을 모아 더 눈부신 가능성을 꽃피운 위대한 하나됨의 원년. 우리가 걸어온 이 모든 역사는 대한민국을 넘어 생명산업 글로벌 거점 대학으로 우뚝 선 새로운 100년의 빛을 맞이하기 위한 가장 견고하고 위대한 비상의 초석이었기에 우리는 주저없이 나아갑니다. 이제 80주년, 그리고 완전히 새로워진 하나의 원권. 우리는 80년의 지혜를 가장 튼튼한 디딤돌 삼아 생명을 품고 더 넓은 세계를 향해 찬란하게 빛날 것입니다. 원광대학교, 우리는 더 큰 빛으로 나아갑니다. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम Choi है और मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अभी मैं टोंगवन यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़ेर तालीम हूँ। हम 25 बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए थे फर्स्ट बैच में। अब सेकंड बैच की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में, जिसमें कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होगा 8 जून को इस्लामाबाद में और 13 जून को लाहौर में। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। मैंने भी 6 मंथ पढ़ के टेस्ट पास किया है। आप लोग भी तैयारी करें और अच्छे से पढ़ें और उस टेस्ट को पास करें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग है और जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत इजी है। इंटरव्यू भी इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत वो आपको बहुत कंफर्टेबल बनाकर आपसे इंटरव्यू लेते हैं और बाकी बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोग यहाँ आएँ और टोंगवन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। और मैडम, आपका कुल टोटल कितना खर्चा हुआ था यहाँ आते में? मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। मेरी फ़ीस भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप में गई और टिकट का खर्चा भी गवर्नमेंट ने उठाया था। उसके अलावा जो हम एम्बेसी में गए इस्लामाबाद में, जो हमने वहाँ पे स्टे किया इस्लामाबाद में, वो सारा खर्चा गवर्नमेंट ने किया। अच्छा, आप बच्चों को कोई पूरा प्रोसेस बताएंगी प्लीज़ कि किस तरीके से आपने किया था? मैंने इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया था कोरियन लैंग्वेज में और वहाँ पर मैंने कोरियन लैंग्वेज की स्टडीज़ की। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट हुआ कोरियन लैंग्वेज का एमएओ कॉलेज में। वो टेस्ट मैंने पास किया, वो 200 नंबर होते हैं उसके टोटल, तो उसमें से 140 वाला पास होता है। टेस्ट पास करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग होती है, पासपोर्ट, वीज़ा, आपकी डिग्रीज, ईच एंड एवरीथिंग।
आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं उसके बाद आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है वहाँ से, और वहाँ पे आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, और वो आप लोगों से आपके बारे में आपने ये मेजर क्यों चूज़ किया, आप कोरिया ही क्यों जाना चाहते हैं, और आप अपना मेजर जो है उसको आगे किस तरह पाकिस्तान और कोरिया के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह के सवालात वो आपसे करते हैं जिसका जवाब आपने उनको देना होता है। ये बहुत इजी है और वो आपसे बिल्कुल कोई मुश्किल सवाल नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल कोई डराते नहीं हैं, बहुत कंफर्ट में रख के आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद वाला प्रोसेस है कि आपका वीज़ा जो है वो कंफर्म होता है, तो उसके बाद आप साउथ कोरिया आ जाते हैं। साउथ कोरिया आके कैसा लगा आपको? साउथ कोरिया एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। यहाँ पर ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ये बहुत सेफ कंट्री है। मैं सब लड़कियों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है किसी अब्रॉड जाकर, तो आप साउथ कोरिया आएँ। यहाँ पर लड़कियों के लिए इतनी सेफ्टी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके अलावा ये कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन ईच एंड एवरीथिंग में बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर तालीम हासिल करें। आपने कौन सा मेजर चूज़ किया और यही क्यों चूज़ किया, और आगे जाके आपका क्या क्या करना चाहेंगी, क्या करेंगी? मैंने IT सॉफ्टवेयर चूज़ किया है। IT सॉफ्टवेयर चूज़ करने की वजह ये थी कि अब दुनिया में कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा ग्लोबली ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। आगे आने वाले दौर में हमें IT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, हर कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्लोबली, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया है, और आगे जाकर मैं इसी में अपना फ्यूचर जो है कैरियर कंटिन्यू करना चाहूँगी, और पाकिस्तान और कोरिया के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद काम करना चाहूँगी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आप कि पहले सेमेस्टर की तो आपको गवर्नमेंट ने जो है वो स्पॉन्सर कर दिया, आप दूसरे सेमेस्टर में क्या आप अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहेंगी या आप यहाँ से इजीली जॉब करके कर सकती हैं? पहले सेमेस्टर में तो हमें गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी सबको। दूसरे सेमेस्टर के लिए अभी मेरा पहला सेमेस्टर कंटिन्यू है, और मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करूँ और उनको कहूँ कि मुझे फ़ीस चाहिए, मेरी फ़ीस जमा, या मुझे कोई ख़र्चा चाहिए मेरे लिए, वो मुझे भेज दें, क्योंकि मैं जो पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कर रही हूँ वो बहुत इनफ है मेरे लिए। तो आप सबको इस चीज़ की परेशानी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको पीछे से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, अपने पेरेंट्स को तंग करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स सुकून में होंगे, आप खुद ही अपनी पार्ट टाइम जॉब करके फ़ीस भी निकालेंगे, अपने खर्चे भी पूरे करेंगे। अच्छा, आप पाकिस्तान की बेटियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? पाकिस्तान की बेटियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने जोन से निकलें, तालीम हासिल करने की जो है वो अपने अंदर चाहत पैदा करें, और बाहर के मुल्क आएँ, यहाँ पे साउथ कोरिया में आएँ। आप लोग वहाँ पे वो जो सेफ्टी है, वो जो बाहर निकल कर आप फील कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो फील कर सकते हैं। वहाँ आप वो चीज़ आप फील नहीं कर सकते, आप बाहर दोपहर में भी नहीं निकल सकते हैं जो हालात हैं। यहाँ पर आप आएंगे, आप रात के 2 बजे भी बाहर चले जाएँ, कोई आप पे आँख उठा के देखने वाला भी नहीं होगा। CM पंजाब जो है हमारी सुपर CM, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें मौका दिया, हमें स्कॉलरशिप दी, ताकि हमें बिल्कुल कोई मसला ना हो, हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। हम 25 बच्चों का बैच यहाँ पे आया, ईच एंड एवरीथिंग हमें उन्होंने प्रोवाइड की, हमें लैपटॉप्स दिए गए, हमें टिकट्स, स्कॉलरशिप्स, ईच एंड एवरीथिंग दी गई कि हम ईजिली आगे अपनी स्टडीज़ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सिकंदर साहब के लिए कुछ? एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात ने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब हम इस्लामाबाद जाते थे, एम्बेसी में जाते थे, हमारी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग थी, उसमें हमें मोफा के जाना पड़ता था, मोफा के लिए, पोस्टाइल के लिए, उन सब प्रोसेस में वो इतना इजीली और इतना स्मूथली हुआ कि उसमें सारी हेल्प राना सिकंदर हयात ने की, और मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया। आखिर में दोंगवन यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप? टोंगवन यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको स्टडीज़ के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ आपको टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, और टेक्निकल स्किल्स जब आपके पास होती हैं तो आपको दुनिया पे कहीं पे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप टोंगवन यूनिवर्सिटी में आएँ और तालीम हासिल करें। आज टोंगवन यूनिवर्सिटी को 30 साल मुकम्मल हो गए हैं, और मैं बहुत फ़ख्र से ये बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और हमारे मुल्क के MOUs यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के बच्चों के साथ इनकी पिक्चर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आकर तालीम हासिल कर सकें, और उम्मीद है कि मज़ीद बच्चे भी यहाँ पर आकर तालीम हासिल करेंगे। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर आप टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं। आखिर में पाकिस्तान
파키스탄 जिंदाबाद. 안녕하세요. 저는 동원대학교 사회복지 상담학과 교수 박소연입니다. 안녕하세요. 동원대학교 웹툰 창작가 교수 하유정입니다. 안녕하세요. 저는 자반입니다. 동원대학교 학생입니다. 안녕하세요. 저는 김다입니다. 동원대학교에서 학생입니다. 네, 지금 이곳은요, 저희 동원대학교 30주년 기념 행사장입니다. 자, 우리 앞으로 동원대학교 30년 이후를 여러분들도 함께 응원해 주시기 바랍니다. 여러 글로벌 학생들의 입학을 환영합니다. 함께하고 싶습니다. आज टोंगवन यूनिवर्सिटी को 2026 में 30 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर ये उनकी टोंगवन यूनिवर्सिटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं फॉरेनर स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और टोंगवन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें. लाहौर पाकिस्तान में 13 जून को टेस्ट हो रहा है कोरियन लैंग्वेज का और इस्लामाबाद में 8 जून को टेस्ट हो रहा है. आप लोग वो टेस्ट पास करें, बहुत ईजी होता है और कोरिया आएँ, टोंगवन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करें. 동원대학교 화이팅!
बेटा आप लोग आगे चले जाएं, आपको सही नज़र नहीं आएगा, यहाँ से सही नज़र आ रहा है? बेटा शीशा गलता है, शीशा गलता है। 장내 정리가 됐어? 네, 됐네. 여기는 없어졌나? 네, 한 분은. 네. 한 분 옮겨 보시겠어요? 또 하나, 또 하나. 잘 나오는지 안 나오는지. 이따가 시험 볼 때 나눠주면 되니까. 아니 나눠주면 안 돼요. 이게 읽고 보고 나서 되돌려받으면 돼요. 헬로? 이 폰은 학생들에게 열 장이잖아요. 제가 학생들에게 맡길게요. 한번 받아야 돼요. 네, 진행주면 안 돼요. 자, 오랜 시간 많이 기다리셨습니다. 지금부터 동원대학 입학 설명회를 시작하겠습니다. इस वक्त ये दोंगवन यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको डीप ब्रीफिंग देना चाहते हैं. 지금 현재 화면에 보이고 있는 편지는 우리 파키스탄 이크라 학생이 3월 달에 입학을 해서 공부를 열심히 하면서 아르바이트를 해서 본인이 돈을 번 첫 번째 돈 번 돈으로 저한테 감사의 편지와 선물을 준 그거를 한번 대략 우리 칸 교수님이 읽어보겠습니다. इस वक्त ये आपके सामने जो एक ख़त नज़र आ रहा है ना, ये पाकिस्तानी एक बच्ची है जिसका नाम इकरा है. वो दोंगवन यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है. वो तीसरे महीने में पाकिस्तान से वो तशरीफ़ लेकर आई थी. तो उन्होंने जब फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, उनकी उम्र 18 साल है, और उन्होंने जब अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पार्ट टाइम जॉब की थी, स्टडी प्लस पार्ट टाइम जॉब, तो उन्होंने उस वक्त फ़र्स्ट टाइम 8 घंटे की जो जॉब की थी, तो उसमें 1,34,000 वान उन्होंने सैलरी ली थी. पाकिस्तानी गालिबन 27-28 हज़ार रुपये बनते हैं. तो उन्होंने ये वीसी साहब जो उस वक्त वीसी थे, अभी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, तो उनको इन्होंने ख़त लिखा था कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे स्कॉलरशिप दी अपनी यूनिवर्सिटी में, और मैं पंजाब गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं 100% स्कॉलरशिप पे गई थी. और एक 18 साल की बच्ची जिसको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, उसने ये सारी चीज़ें कोरियन लैंग्वेज में लिखी हैं और इनका शुक्रिया अदा किया. तो ये वो जहाँ भी पूरी दुनिया में जाते हैं तो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे कितने अच्छे हैं और पाकिस्तान का कितना अच्छा इमेज है. ये सामने आपके है कि उसने उसमें सारी डिटेल्स अपनी लिखी है कि जब भी पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा सा लिखा है कि बच्चा जब भी अपनी पहली सैलरी लेता है तो अपने माँ बाप को उसमें से कुछ देता है. तो मेरे माँ बाप पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे तो आप सब कुछ यहीं कोरिया में. तो उन्होंने जो है इसको फिर यहाँ से इन्होंने भी उसको स्कॉलरशिप और मज़ीद ऑफ़र की थी. 저는 이 편지를 받고 퇴근하면서 눈물이 났습니다. ये कहते हैं जब मुझे ये ख़त मिला था तो और मैं जब अपने घर जाने लगा ड्राइव कर तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था कि पाकिस्तानी बच्चों में भी इतनी ज़्यादा जो है ना अपनाइयत है और इतना ज़्यादा प्यार है. 감사합니다. 한국에서 한국에만 가기만 하면 성공할 수 있다라고 아까 말씀을 드렸는데, 이 학생은 파키스탄에서 한국어 공부를 열심히 해서
17살밖에 안 된 그 소녀가 동원대학에 입학해서 열심히 살고 있는 모습이 감동적이라 눈물이 났던 것 같습니다. ये कहते हैं मैं इस वजह से रोया था कि एक 17 साल की बच्ची उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है और उसने अपने जो है एक्सपीरियंस पूरे जो है ख़त में लिख कर दिए कि एक 17 साल की बच्ची पाकिस्तान में कितने सारे बच्चे जो 17 साल के क्या कोई उनमें से ऐसा बच्चा है जो पाकिस्तानी 27-28 हज़ार रुपये जो है वो 4 या 5 घंटे में कमा सकता है। तो इजीली वहाँ पर इस तरीके से आप लोग इजीली अपने वालिद वालदा पे जो है ना वो बर्डन नहीं बनेंगे, आप इजीली जो है वहाँ से पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम लेकर आए दोंगवन यूनिवर्सिटी वो स्टडी प्लस पार्ट टाइम जॉब का प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए। 우리 동원대학은 파키스탄 학생들을 위해서 우리 칸 교수님을 교수님으로 작년에 모셨습니다. 인사드리겠습니다. ये मेरे हवाले से आपको बता रहे हैं कि दोंगवन यूनिवर्सिटी ने ये जो पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया उसके लिए मुझे लास्ट 1 ईयर से मैं दोंगवन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो है एज अ प्रोफेसर इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में थोड़ा सा अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। 감사합니다. 동원대학은 한국의 수도권에 있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी जो है वो सोल के नज़दीक जो है मौजूद है। 서울 강남에서 강남 스타일 아시죠? 강남에서 강남 स्टाइल का आपको पता होगा। 1시간 정도면은 대중교통으로 동원대학을 왔다 갔다 할 수 있습니다. विदिन 1 आवर आप जो है इजीली दोंगवन यूनिवर्सिटी से खांगनाम जो है बाय बस बाय ट्रेन जा सकते हैं। ट्रेन जो है वो 20 मिनट्स लगते हैं, बाय बस 1 आवर। 동원대학은 30년 된 대학입니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी को जो है पिछले वीक 30 साल साउथ कोरिया में हो गए। 설립자께서는 영국의 옥스퍼드에서 박사학위를 받으신 분이고 दोंगवन यूनिवर्सिटी के जो जिन्होंने फाउंडर हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। 그 아드님도 역시 옥스퍼드에서 박사학위를 받으셨습니다. ये उनके बेटे हैं डॉक्टर ली, ये भी ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट है। 현재 이사장님이시고 국가에서 훈장도 받으셨습니다. 이정훈 이사장님. ये दोंगवन यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स। 특성화 전문대학이라 그래가지고 동원대학은 한국에서 전문대학에서 우수한 대학을 선정하는 대학으로 교육부 선정된 거. दोंगवन यूनिवर्सिटी को 2017 के अंदर कोरिया के अंदर जो है ना टॉप यूनिवर्सिटी टेक्निकल साइड पे इसको अवार्ड मिल चुका है। WCC는 월드 클래스 college 세계적 수준의 전문대학에 선정됐는데 131개 대학 중에 18개 대학에 들어간 겁니다. ये वर्ल्ड के अंदर जो टेक्निकल कॉलेज है उसके अंदर WCC की तरफ से भी 2017 में इनको अवार्ड मिल चुका है और रिकग्नाइजेशन हो चुकी है। 이것도 교육부에서 선정된 우수 대학. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साउथ कोरिया की जानिब से 2019 में 지방자치단체 경기도에서 우수 대학으로 선정됐습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी को क्योंगी-दो प्रोविंस की तरफ से भी जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी का 2025 में अवार्ड मिल चुका है। 외국인 유학생을 얼마나 잘 가르치고 얼마나 그 유지 관리를 잘하는 평가에서 인증 대학으로 된 겁니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साउथ कोरिया की तरफ से 2026 में D2 वीज़ा और D4 वीज़ा जो है वो कोरियन लैंग्वेज का है और D2 जो है वो टेक्निकल वीज़ा है स्टडी का। तो इन दोनों वीज़ों पे दोंगवन यूनिवर्सिटीज़ को अवार्ड मिल चुका है और रिकग्नाइजेशन मिल चुकी है 2026 में इसी साल। 한국에는 전문대학이 131개 대학이 있습니다. कोरिया के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो 131 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। 그 중에서 30등 안에 들어야 됩니다. उसके अंदर टॉप 30 के अंदर दोंगवन यूनिवर्सिटी मौजूद है। 아까 그 월드 클래스 커리지는
18등 안에 들어야 되는 거. और जो वर्ल्ड के अंदर है वो 18 नंबर पे ये मौजूद है टेक्निकल फील्ड में। 그럼 이제 동원대학의 수준을 어느 정도 가늠할 수 있죠. अब आपको आइडिया होगा कि दोंगवन यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे मौजूद है। 동원대학에는 이제 한국어 연수 과정 D4 과정으로 오는 과정이 있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी में आप D4 वीज़े पे भी जा सकते हैं कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए। D2는 이제 토픽 2급을 가지고 학과로 바로 입학하는 과정입니다. अब उसके बाद अगर आप D2 पे डायरेक्ट आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या कोई अपनी डिग्री करना चाहते हैं तो उस पे आप D2 वीज़ा उसको कहते हैं। तो D2 वीज़े पे जाने के लिए उसकी दो शर्तों में से एक शर्त ये है कि या आपने आइल्स कोरियन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हो या कोरियन लैंग्वेज का टॉपिक 2 क्लियर किया हुआ। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होगा तो आप साउथ कोरिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में D2 वीज़े पे जा सकते हैं। D2 과정을 2년을 마친 다음에 계속해서 공부를 아르바이트를 하면서 공부를 하겠다 하면은 D2-2 3, 4학년 과정으로 진학할 수 있습니다. अगर आप D2 वीज़े पे साउथ कोरिया जाते हैं 2 साल के बाद अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं 2+2 तो आप स्पेशलाइज भी 4 ईयर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं दोंगवन यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अगर 2 साल से की डिग्री कंप्लीट की अगर आप जॉब पे जाना चाहते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप 4 साल का अपना BS मास्टर्स इजीली साउथ कोरिया में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है दोंगवन यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारी यूनिवर्सिटियों के लिए यही सेम प्रोसेस है। D2 2년을 졸업하고 바로 취업을 해도 되고 3, 4학년에서 4년제 학사학위를 받겠다고 하는 사람은 그 과정에 입학하는 거죠. दो साल की आप D2 की डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी में भी जाना चाहते हैं, IT की फील्ड में जाते हैं और 2 साल बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप अपनी डिग्री 2 साल की लेकर आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप मज़ीद 4 साल पढ़ सकते हैं। 동원대학교 주변에는 아르바이트 자리가 많아서 대부분 학생들이 2+2를 원하고 있습니다. ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ जो है ना वो 2+2 यानी 4 ईयर का अपना बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है। तो वो यही उनको अपने वालिद वालदा से पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंटली सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वो मज़ीद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। 우리 파키스탄 학생들의 아르바이트 자리를 일을 봐주다가 어쩌다가 아르바이트 담당 교수님이 되셨습니다. पाकिस्तानी जितने भी बच्चे हैं जॉब पे पाकिस्तानी नहीं दोंगवन यूनिवर्सिटी या कोई भी, क्योंकि 21 साल पहले मैं भी आपकी तरह इन्हीं डेक्सो से साउथ कोरिया गया था तो मुझे पता है कि वहाँ किस तरीके से पार्ट टाइम जॉब की जाती है। तो वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं तो मैं उनको आइडिया दे देता हूँ और उनको बता देता हूँ, उनकी हेल्प कर लेता हूँ। ईज़िली वहाँ पर जॉब का कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री जो है वो साउथ कोरिया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है मैंने 71 कंट्रीज़ पूरी दुनिया में घूमे, साउथ कोरिया जैसी जगह नहीं है। अमेजिंग कंट्री। 이따가 조금 잠시 후에 아르바이트에 대해서는 직접 담당 교수님께서 설명을 드리도록 하겠습니다. अभी जब इनकी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, इनकी तकरीर कंप्लीट हो जाएगी तो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से मैं आपको डीपली ब्रीफ कर दूंगा। 제가 설명드리는 것보다 칸 교수님이 설명드리는 게 더 신뢰가 갈 것 같아서 그렇게 하겠습니다. ये कहते हैं कि मेरी जगह अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। 자, 이제 어학 연수 과정입니다. ये कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है D4 वीज़े में। जो भी बच्चे जिन्होंने यहाँ कोरियन लैंग्वेज नहीं सीखी अगर वो साउथ कोरिया में जाके कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो D4 वीज़े पे साउथ कोरिया जाकर कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। 이건 자격에 대해서 설명하실 수 있죠? 네, 할 수 있습니다। 해보세요. ये वो तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है। वो इजीली लास्ट उनका जो अटेंडेंस का लेवल है वो अपना 90% से कम ना हो। और D2 वीज़ा जो D4 वीज़ा जो है ना वो पाकिस्तान में इतना इजी नहीं लगता है, थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। 70% इसमें लिखा हुआ है कि 70% आपके इंटर में मार्क्स होने चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर कंसीडर 80% तक को करते हैं। D4 वीज़ा जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोंगवन यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका
वीज़े का रेशियो जो है D4 का वो 70% से 80% है। बाकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हैं, यहाँ एहतेशाम साहब बैठे हैं उनको भी मालूम होगा, वो 1 और 2% है। तो ज़्यादातर क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है D4 वीज़ा, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपके फ़ायदे में हो। तो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है क्योंकि मैडम आलिया भी वहाँ साउथ कोरिया होकर आई हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया। तो D4 वीज़े से बेटर D2 है। अगर आप यहाँ कोरियन लैंग्वेज सीख कर अच्छी तरीके से जो है अप्लाई करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मज़ीद कोरियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, कोरियन सीखना चाहते हैं और फिर आगे मज़ीद कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने कोरियन लैंग्वेज में PhD की थी, तो फिर आप D4 पे जाएँ। 이 기준은 동원대학교에서 정한 것이 아니고 대한민국 법무부에서 정한 기준입니다. ये जो वीज़े की रिक्वायरमेंट है, ये जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, ये दोंगवन यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी ऑफ साउथ कोरिया की। 지난 3월 달에는 이제 안타깝게도 D4 비자를 신청했다가 거의 불허되는 그런 상황이 있었습니다. लास्ट टाइम हमने D4 वीज़े में 16 बच्चों के वीज़े जमा कराए थे, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों के वीज़े लगे थे, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए थे। 앞으로 이걸 해결해야 할 숙제가 남아 있는 겁니다. अभी हम इसको जो है ना इस पे मज़ीद स्टडी कर रहे हैं, तो अब D4 वीज़े पे हम मज़ीद स्टडी करके इसको भी जो है हम पाकिस्तानियों के लिए ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। 등록금은 D4 비자는 한국 돈으로 500만 원 한 번 내야 되고요. 그 다음에 기숙사비를 100만 원 정도씩 내야 됩니다. यहाँ पर ये ट्यूशन फीस लिखी हुई है D4 वीज़े की, ये कम से कम 50 लाख वान बनती है ना, 1 ईयर की फ़ीस 50 लाख वान बनती है और 10 लाख वान आपकी डोमेट्री के, तो ये 60 लाख वान के करीब जो है ये बनती है दोंगवन यूनिवर्सिटी में जाकर कोरियन लैंग्वेज की। तो उसका सबसे इजी हल ये कि यहाँ से कोरियन लैंग्वेज करें। यहाँ पर जैसे आज एग्ज़ाम होना है, जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली वीज़ा जमा करा सकते हैं। 지금 D4에 입학해 있는 국가를 보았더니 13개 국가에서 와 있습니다. इस वक्त दोंगवन यूनिवर्सिटी में D4 वीज़े पे जो है 13 कंट्रीज से जो है वो बच्चे ज़ेरे तालीम में मज़ीद कोरियन लैंग्वेज वहाँ जाकर सीख रहे हैं। एक साल का आपको पूरा इन्होंने सिस्टम दिखाया था कि एक साल में बच्चे जो हैं 4 स्टेप कोरियन लैंग्वेज के वहाँ सिखाए जाते हैं। 자, 이제 D4 학생들도 공부하랴 아르바이트하랴 바쁘지만 한 학기에 한두 번 정도는 저렇게 문화 체험도 하고 그다음에 운동회도 하고 축제도 하고 그렇습니다. D4 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, फिर वो कोरियन कल्चर को भी सीखते हैं क्योंकि वहाँ आप कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं। 자, इ제 본과로 토픽 2급을 따고 본과로 바로 이제 들어올 수 있는 그런 과정을 소개합니다. अभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिसमें आपको इजीली वीज़ा भी आपका लग जाएगा, तो उसके लिए अब आपको बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी आप कंसल्टेशन से सुनिएगा इसको, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 영어 트랙도 있기 때문에 영어 자격을 갖춘 사람들은 별도로 지원하면 가능합니다. वो तमाम बच्चे D4 में जो अप्लाई कर सकते हैं, उसकी दोनों में से कोई एक शर्त कंप्लीट हो, या उनके पास आइल्स 5.5 बैंड से अप हो, या कोरियन लैंग्वेज का लेवल 2 कंप्लीट हो, चाहे वो उन्होंने सेजोंग ओहाकतांग से किया हुआ हो या यहाँ पर जो आज टेस्ट हो, उन दोनों में से कोई भी 140 नंबर से जिसके ऊपर होंगे वो एलिजिबल होगा कोरिया जाने के लिए। 오늘 이 시간이 끝나면은 여기도 이제 토픽 시험을 동원대학교 토픽 시험을 치르죠. अभी जैसे ही आपकी यहाँ पर इनकी कंप्लीट होगी डॉक्यूमेंट्री, तो उसके बाद फ़ौरन टॉपिक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने कोरियन लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे।
토요일 날은 라오르의 MAO 대학에서 또 토픽 시험을 치르는 계획이 있습니다. अगर इनमें से कोई बच्चा इन केस फेल हो जाता है ना तो लाहौर में उसको एक और मौका मिलेगा। लाहौर में जो है हफ्ते वाले दिन टेस्ट है, वहाँ पर 300 बच्चे ऑलरेडी जो है ना वो पिछले 1 साल से स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ हफ्ते वाले दिन टेस्ट है। अगर यहाँ अल्लाह ना करे कोई बच्चा फेल हो जाता तो वो लाहौर जाके भी दे सकता है। 지난 1월 달에는 MAO 대학에서 191명이 토픽 시험을 치렀습니다. पिछले साल दिसंबर में जो है MAO कॉलेज लाहौर में जो टेस्ट हुआ था उसमें 191 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 66 बच्चे पास हुए थे। 동원대학은 이제 인증대학이기 때문에 아까 인증대학이라고 했죠. 인증대학이기 때문에 이 토픽 시험 패스하면 더 유리한 조건으로 비자가 나올 수 있을 것 같습니다. तोंगवन यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साउथ कोरिया की तरफ से और वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, तो वीज़े में कोई मुश्किल नहीं होगी, इजीली वीज़ा आपका मिल जाएगा आप लोगों को। 자, 우리 D2 본과는 외국인 전용 학과입니다. तोंगवन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप इन ट्रैक पे जो है इजीली जाकर वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। 9개 분야가 있습니다. इसमें जो है वो 9 किस्म के फॉरेनर्स के लिए स्टडी कोर्सेज मौजूद हैं। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने ऐड करनी है, आईटी सॉफ्टवेयर जो है वो नेक्स्ट से एआई में चेंज हुआ है, जो उसमें आप लोग ज़्यादातर अप्लाई कीजिएगा, वहाँ वीज़ा भी इजी लगेगा और एआई आपको पता है आने वाले मज़ीद 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। 9वें महीने से जो ट्रैक स्टार्ट होगा आपका, उसमें आईटी सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ प्लस एआई। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो है वो के ब्यूटी के फूड में जाती हैं, उसके बाद के वेलफेयर, फ्यूचर ऑटोमोबाइल्स है और वेल्डिंग है। ज़्यादातर लड़के जो हैं वो वेल्डिंग में जाते हैं, अपनी वहाँ से डिग्री कंप्लीट कर इजीली उनको सैमसंग या होंडे में जॉब मिल जाती है। लड़कियाँ जो हैं ज़्यादातर वो के ब्यूटी को प्रीफर करती हैं। तो अगर आप के ब्यूटी में जाती हैं साउथ कोरिया में, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, साउथ कोरिया में जहाँ भी के का वर्ड आ जाता है ना, के का, तो उसमें साउथ कोरियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। साउथ कोरिया जो है ना वो इन्वॉल्व होने के बाद अगर आप साउथ कोरिया जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बेटी यहाँ से साउथ कोरिया जाकर के ब्यूटी में अपना 2 साल का कोर्स कंप्लीट करती है या मज़ीद 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर या के फूड में वो वापस पाकिस्तान, दुबई या कहीं पे भी अपना स्टार्टअप करना चाहती है, कोई बिज़नेस करना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया और तोंगवन यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेंगे कि आप अपना बिज़नेस करें, क्योंकि आप उनका कल्चर, उनका सिस्टम, उनका फूड, उनका जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं, तो उसमें ये सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो बच्ची हैं वो के फूड में और के ब्यूटी में गई हैं स्कॉलरशिप पे, तो वो वापस आना है या उन्होंने या वहीं उन्होंने एडजस्ट होना है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड वाइड। अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूशन फ़ीस कितनी है। ट्यूशन फ़ीस जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो ट्यूशन फ़ीस है वो 20 लाख वन यानी पाकिस्तानी 4 लाख रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, उसमें डोमेट्री फ्री है। नेक्स्ट सेमेस्टर जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें 39 लाख वन फ़ीस है, उससे जो आगे सेमेस्टर हैं यानी जो 4 सेमेस्टर होंगे उसमें 39 लाख वन फ़ीस होगी। लेकिन इजीली आप वहाँ साउथ कोरिया जब जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब से आप इजीली अर्न कर लेंगे। उसमें मसला ये होता है कि आप सिर्फ वहाँ पहुँच जाएँ। फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो 20 लाख, लास्ट टाइम जो बच्चे गए वो तो 100% स्कॉलरशिप में गए थे, जिसके जितने नंबर ज़्यादा होंगे उसमें ये 20 लाख वन में से उसके डाउन हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं या 3 लाख रुपए, आप इजीली साउथ कोरिया जा सकते हैं। तो बाकी कैप्स और जो भी वहाँ यहाँ के मामला हैं वो हमें नहीं मालूम, साउथ कोरिया के जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने। 이 본과로 들어오면 아르바이트를 할 기회를 많이 주기 위해서 일주일에 이틀만 대면 수업을 하고 있습니다. जब भी आप साउथ कोरिया में D2 वीज़े पे जाएंगे तो वहाँ इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑफलाइन जो कोर्सेज़ हैं वो 2 दिन हैं, उसके बाद मज़ीद ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। तो आप इजीली हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेंगे और बाकी आपके पास जो 5 दिन बचेंगे वो आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट आया था ये जॉब प्लस स्टडी आया था। मैं 설명하려고 그러는 걸 다 해버리네요.
그래서 5일 동안 아르바이트를 해서 이제 돈을 벌 수가 있는 거죠. 5 दिन जो है आप इजीली 2 दिन आप स्टडी करेंगे, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेंगे अपनी, और बाकी मजीद 5 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ आप इजीली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। D2 과정을 살펴보니까 11개 국가에서 지금 공부하고 있습니다. इस वक्त तोंगवन यूनिवर्सिटी के अंदर D2 वीज़े पे 11 कंट्रीज से जो है वो 900 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 그래서 D2, D4 이렇게 합쳐보면 15개 국가에서 지금 동원대학에 와 있습니다. D2 और D4 को जब कंट्रीज़ को आप मुआवजना करेंगे तो 15 कंट्रीज़ से लोग जो हैं 1000 के करीब तोंगवन यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। 이제 우리 학생들이 한 달에 생활비나 한 학기의 학비나 이거를 본인 스스로 벌고 나머지는 저축도 해야 되기 때문에 아르바이트를 반드시 해야 되는데 아르바이트를 하려면 한국말을 잘하는 게 유리합니다. अभी ये आपको एक टिप दे रहे हैं कि आपने अपना फ्यूचर सेव करना है, अपना के ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब तो आपको मिल जाएगी इजीली। जितनी अच्छी आपकी कोरियन लैंग्वेज होगी उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी। 의사소통이 한국말을 잘해서 의사소통이 잘하면 돈을 많이 벌 수 있는 쉽고 재밌는 일자리를 갖습니다. कोरियन लैंग्वेज जितनी आपकी अच्छी है उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी और आप बहुत अमेजिंग जॉब्स मिलेंगी वहाँ पर। 주로 이렇게 시원하거나 따뜻한 데서 일을 할 수 있는 거죠. कोरियन लैंग्वेज आपकी जितनी अच्छी है उस हिसाब से आपको ऑफिस जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलेगी। 근데 이 의사소통이 잘 안다면 몸으로 하는 걸 해야 돼, 몸으로. उसके बाद अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी लेकिन फिर वही मजदूरों वाला काम मिलेगा। 돈도 그 사람들보다 적게 벌면서 땀을 많이 흘려야 돼. उसमें फिर आपको पसीना भी आएगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी होगी, क्योंकि कोरिया के अंदर जो सर्दियों में -30 डिग्री तक सेंटीग्रेड जाता है। तो अगर आपकी कोरियन लैंग्वेज अच्छी है तो आपको ऑफिस जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। कोरियन लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपको ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी लेकिन डिफ़िकल्ट जॉब मिलेगी। 아까 그 저한테 편지 쓴 이크라 학생은 호텔리어예요, 호텔리어. जो अभी जिस बच्ची का आपको बता रहे थे कि वो होटल में जॉब करती है रिजर्वेशन पे। 자, 그럼 현실적으로 우리 학생들이 아르바이트를 어떻게 하고 있고 일자리는 어느 만큼 있는지 현재 상태를 우리 담당 교수님이 소개하도록 하겠습니다. ये अभी आपको पार्ट टाइम जॉब के हवाले से बता रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ पार्ट टाइम जॉब। मैं 21 ईयर हो गए मुझे साउथ कोरिया में। तो मैं जब गया था, मैं सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में गया था एज ए D4 स्टूडेंट। तो वहीं से ही मैंने जो है PhD अपनी कंप्लीट की थी कोरियन लैंग्वेज में। तो मैं वहीं साउथ कोरिया का ही हो गया, मैंने साउथ कोरियन नेशनलिटी भी ली। तो मुझे कभी भी जब मैं यहाँ से गया था तो मेरी मामा ने अपनी चूड़ियाँ बेची थी मुझे भेजने के लिए, और मेरे पास फिर भी टिकट के पैसे नहीं थे। मुझे ये आज तक याद है। तो मेरा ताल्लुक़ कराची से था, तो मेरा एक मोबाइल भी छिन गया था। वो उस टाइम पे मोबाइल नए जस्ट आते थे। तो मैं कितनी तकलीफ़ से यहाँ से गया था मुझे बहुत मालूम है। एक टाइम ऐसा आया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं मोबाइल भेजता था, तो यहाँ तक भी आया। और यकीन करें कोरिया में जॉब करना कोई मुश्किल नहीं है। मैडम वहाँ रह कर आई हैं, फर्स्ट डे से जिस दिन आप जाते हैं इजीली आपको जॉब मिल जाती है कहीं पे भी। उसकी वजह ये कि इन्होंने कोरियन बना तो बहुत दिया, बहुत वर्ल्ड में तरक्की कर ली, अब इनके पास बच्चे नहीं हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए। एयरपोर्ट पे जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑफिस में काम करने के लिए ज़रूरत है। इन्होंने अपना मुल्क तो बना लिया, 4.5 करोड़ इनकी आबादी है और उसमें से 3.5 करोड़ सिर्फ सोल में रहते हैं, बाकी पूरा कोरिया खाली है। जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो लोग यूके गए थे, आपके लिए इस वक्त साउथ कोरिया है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो साउथ कोरिया में। आप लोग खुद समझदार हैं, आपको सब पता होगा। किसी को भी चांस मिलता है, एक बार ही सबको चांस मिलता है, उस चांस को अवेल करें। जॉब की जो है वो टेंशन नहीं है, ईज़िली आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी और जॉब के लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज अच्छी बोल सकते हैं, अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। बाकी कोरिया इतना सेफ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डॉक्टर एहतेशाम यहाँ पे बैठे हैं, मैडम आलिया साउथ कोरिया होकर आई हैं, रज़ाक साहब होकर आए, तो आप इनसे पूछ सकती हैं कि कोरिया कितना सेफ है।
और मज़े की बात ये है कि वहाँ लाइट भी नहीं जाती। साउथ कोरिया की है 2013 में ना 3 मिनट के लिए लाइट गई थी, तो वहाँ पर जो उनके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पानी और बिजली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था सिर्फ 3 मिनट के लिए 2013 में। और एक और मज़ीद आपको मैं बात बता दूँ साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में जब एग्ज़ाम होता है ना लिसनिंग का, तो वहाँ पर फ़िज़ा में जहाज़ भी नहीं उड़ता। तो मुशर्रफ साहब 1999 में आ रहे थे साउथ कोरिया, तो उनको रोक लिया गया था कि आप कोरिया में नहीं आ सकते, आधा घंटा आपने वेट करना होगा, यहाँ बच्चे जो है ना वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो साउथ कोरिया स्टडी के मामले में 99% बहुत आगे, हमारी सोच भी नहीं है टेक्नोलॉजी और स्टडी के हवाले से। 자, 그 동원대학교가 그렇게 아르바이트 자리가 많다는 거를 저도 놀랐습니다. मुझे भी इतना इल्म नहीं था कि दोंगवन यूनिवर्सिटी के नज़दीक इतनी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स हैं। 왜냐하면 안 보내봤으니까 몰랐죠. कहते हैं मुझे पता नहीं था ना कि मैंने कभी बच्चों को भेजा नहीं जॉब पे पार्ट टाइम के और हवाले से, कभी बच्चों ने बताया भी नहीं। 이제 동원대학에 우리 유학생들이 많다는 소식이 다 알려져 가지고 칸 교수님한테 전화가 계속 오고 있는 겁니다. तो ये अभी बताते हैं कि मुझे जॉब के हवाले से, तो मैंने इनको ब्रीफ किया था, तो इजीली कोरिया में क्या पूरी दुनिया में अब काम करने वाला बंदा होना चाहिए, उसको जॉब हर जगह ही मिल जाती है। 그러니까 아까 얘기했듯이 D2 2년만 하고서 취업할 생각 안 하고 계속 아르바이트를 해서 4년의 학사학위를 따려고 하는 사람이 거의 98% 이상 되는 거예요. 98% बच्चे जो है ना वो मज़ीद अपनी तालीम जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, PhD तक जाते हैं। 98% जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं 98% वो इसलिए कि वहाँ उनको इजीली स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और इजीली जॉब भी मिल जाती है। अच्छा, जितनी अच्छी कोरियन लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोरियन लैंग्वेज का लेवल 6 कर लेते हैं तो आपको कोरिया में तालीम जो है वो फ्री हो जाएगी, आपको फ़ीस भरनी ही नहीं पड़ेगी। जितने आपके कोरियन लैंग्वेज के स्टेप ज़्यादा होंगे आपको पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, वो सारे पैसे आप अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। 한국은 남녀 차별이 없습니다. कोरिया के अंदर जो है ना वो डिफरेंस नहीं है, ना लड़के को लड़की पे ना लड़के को लड़की पे, कोई डिफरेंस नहीं, सब बराबर है। 그리고 외국인과 내국인 차별이 없어요. तो जो 1400 साल पहले हमारे नबी ने जो बातें बताई थी कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे किसी पे कोई फ़र्क फौकियत नहीं है, वही सारी चीज़ें साउथ कोरिया में है। अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ी होंगी तो उसको सारा पता होगा, वहाँ फॉरेनर्स और कोरियन सब बराबर हैं। 차별을 하면 고발하면은 바로 형사처벌입니다. अगर आप किसी के साथ जो है डिफरेंस करते हैं तो फ़ौरन आपको जो है कानून की गिरफ्त में आएंगे। 한 3-4개월만 벌면 1년 학비, 기숙사비 뭐 다 된다고 보고 있어요. अगर आप 3 महीने तक इजीली कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब कर लेते तो आप पूरे साल की फ़ीस जो है वो जमा कर लेंगे। 그 부모님한테 송금한다는 얘기 듣고 저도 깜짝 놀랐습니다. ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एकदम सरप्राइज़ हो गए थे कि इतने जो बच्चे हैं जो 1 साल से वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है। 동원대학교 건물은 전국에서 가장 멋있습니다. दोंगवन यूनिवर्सिटी जो है पूरे कोरिया के अंदर बहुत खूबसूरत प्लेस है, क्योंकि इनके जो जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, तो सारा सेम सिस्टम इसका उसी तरीके से है। 왜냐하면 아까 설립자 또 그 아드님인 이사장님이 옥스퍼드에서 공부하셨기 때문에 유럽 미주 지역 이 건물의 모형을 땄기 때문이죠. ये जिन्होंने दोंगवन यूनिवर्सिटी बिल्ड की थी, फाउंडर जो थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ज़ेर तालीम थे, तो उन्होंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑक्सफोर्ड हर जगह वो गए, तो उन्होंने वही सेम उसको फोकस करते हुए जो बिल्डिंग्स हैं वो उसी तरीके से डिज़ाइन की। 실습실입니다. ये वेल्डिंग की लैब, ये इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट, ये ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये जो सामने डिपार्टमेंट है इसके अंदर के फूड, के ब्यूटी, के कल्चर, के वेलफेयर जो है स्टडी की जाती है। ये के फूड,
के ब्यूटी, ये कल्चर एंड आर्ट, ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ से साउथ कोरिया जाते हैं तो ये फ्री मेजर्स है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मेजर जो है अपना सेलेक्ट करूं, तो आप 6 मंथ फ्री मेजर में जाकर वहाँ साउथ कोरिया में जाकर भी अपना मेजर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आईटी सॉफ्टवेयर में जाते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं आईटी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ पा रही, या मुझे इसकी डिमांड अब पाकिस्तान में कम हो गई है, के ब्यूटी की डिमांड ज़्यादा है, तो शुरू के फर्स्ट सेमेस्टर में आप अपना जो है मेजर चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद आपका मेजर चेंज नहीं होगा। 깜짝 쇼를 잘하는 파키스탄이네요. 깜짝 쇼, 깜짝. 근데 한국도 우리 어렸을 땐 이랬어요. कोरिया जो है आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले उसकी भी यही हालत थी। 이거 아까 전공시만 안 해도 되잖아. देखिए ये 4 साल का ये ग्लोबल हाउस और ये ड्रीम हाउस है। तो जो बच्चे D4 वीज़े पे कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए जाएंगे वो ग्लोबल हाउस में रहेंगे, और जो D2 वीज़े पे जाएंगे वो ड्रीम हाउस में रहेंगे। ये आपका हॉस्टल, ये अच्छा एक मज़े की बात ये है कि दोंगवन यूनिवर्सिटी के अंदर ना हम लोग सारे हलाल फूड खाते हैं ना, तो वहाँ कोरिया के अंदर जो है कोरियन फूड आप लोग जाते ही नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को रोटी और सालन वगैरह खाने की आदत होती है। तो वहाँ आप इजीली अपना हलाल फूड कुक कर सकते हैं, तो वहाँ आपको कोई नहीं। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में D2 वीज़े वालों के लिए फ्री है, 24 आवर ओपन है। 그 주방 시설은 이제 우리 학생들이 아르바이트하고 아르바이트를 야간에 하면 봉급을 더 많이 받습니다. ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब रात में करते हैं ना, रात में जब जॉब पर जाते हैं ना तो उनको पैसे डबल मिलते हैं। 주말에 하면 더 많이 받죠. और सैटरडे संडे जॉब पे जाते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। 근데 아르바이트하고 기숙사에 오면 배가 고프면 어떻게 해요? अब वो पार्ट टाइम जॉब से जब घर आते हैं तो उनको भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे? 본인이 자기네 나라 음식을 해 먹을 수 있는 시설을 해놨습니다. इस वजह से इन्होंने कहा है कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर डोमेट्री बना दी है, वो अपने मुल्क का खाना जो जिस कंट्री से वो इजीली पका कर खा सकता है। 동원대학은 24시간 개방합니다. 24 आवर ओपन है, और मज़े की बात ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 그 경비하시는 분이 귀찮았던지 지난주에 잠시 이렇게 크로스 했는데 그걸 다시 시정했습니다. लास्ट टाइम जो है सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ बच्चों को बैंड कर दिया था डोमेट्री यूज़ करने के लिए, तो उन्होंने कंप्लेन की, तो फिर इन्होंने उसको चेक किया और उसको खुलवा दिया। 24시간 개방해야 저도 마음이 편하죠. 24 आवर्स जो है आपके लिए ओपन है डोमेट्री, तो आप इजीली जब जिसको स्टडी कर रहा है बच्चा, जब भूख लगती है तो खाना बनाकर इजीली खा सकता है। 다른 대학은 대부분 대학이 밤 11시면 기숙사에 못 들어갑니다. ज़्यादातर साउथ कोरिया के अंदर ये रूल था कि 11 बजे के बाद आपको डोमेट्री से बाहर निकलने के लिए और डोमेट्री में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। 동원대학은 365일 24시간 개방입니다. पूरे साल और 24 आवर तोंगवन यूनिवर्सिटी जो है वो डोमेट्री ओपन है, किसी भी टाइम आप जाएं अपना जो कर सकते हैं करें। 그건 제가 결정했습니다. ये इन्होंने खुद फैसला किया था। 저도 우리 딸을 해외에 유학시킨 경험이 있습니다. कहते हैं मैंने भी अपनी बेटी को आउट ऑफ कंट्री स्टडी के लिए भेजा था। 그때 부모 마음은 아이가 무엇을 먹는지 잠은 어떻게 자는지 가장 걱정스러웠습니다. कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और मेरी बेटी जब बाहर थी तो मुझे आइडिया है कि मेरी बेटी ने खाना खाया होगा नहीं, क्या किया होगा, मैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन में था। 모든 부모님들은 다 같은 마음이잖아요. ज़्यादातर सारे जितने भी माँ बाप हैं वो उनका सबका जो है ना दिल सेम है। 우리 학생들 부모님들께서도 늘 그런 걱정을 하실 겁니다. आपके माँ बाप की भी यही कंडीशन होगी जब आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। 그러면 내 아들 딸이라고 생각하면 문을 잠글 수가 없겠죠. मेरा बेटा या मेरी बेटी होगा, क्या मैं उनके लिए दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ? 그래서 24시간 365일 개방하는 겁니다. 24 आवर ओपन है।
가족이기 때문에. क्योंकि मेरी फैमिली है, जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे मेरी फैमिली। ये लाइब्रेरी है दोंगवन यूनिवर्सिटी की, ये फिटनेस सेंटर। 남학생들이 주로 많이 활용하고 있습니다. स्टेडियम। 자, 우리가 졸업을 하면 최대 목표가 뭐예요? 취업입니다. आप लोग यहाँ पर जितने भी जा रहे हैं वो के ड्रीम पर यही जा रहे हैं कि ना आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। 저는 2년 정도 전부터 학교 주변에 업체들을 MOU를 다 체결했습니다. जितने भी साउथ कोरिया के अंदर जो ख्वांगजू प्लेस है उसके नज़दीक जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन्होंने उनके साथ ऑलरेडी MOU साइन किए हैं 2 साल पहले। 27,000개 업체하고 MOU를 체결했습니다. ये दो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है कि इन्होंने कुल टोटल इतनी कंपनियों के साथ जो है वो MOU साइन किए हैं। 우리 유학생들의 인적사항을 다 수집해서 홍보를 하는 겁니다. जितने भी आप लोगों की CVs वगैरह हैं वो ऑलरेडी मुख्तलिफ कंपनीज में भेज दी जाती है। 사장님들은 첫 번째 질문이 의사소통 잘 됩니까? कंपनी ओनर्स का सबसे पहला सवाल यही होता है कि बच्चा कोरियन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकता है या नहीं। 의사소통만 잘 되면 취업은 가장 우선적으로 됩니다. कोरियन लैंग्वेज आपको जितनी अच्छी आती है इजीली आप जॉब कर सकते हैं। 의사소통이 잘 안 되면 면접에서 떨어질 확률이 있습니다. अगर आप कोरियन लैंग्वेज नहीं जानते तो आप जो इंटरव्यू है उसमें फेल हो सकते हैं। 토픽 시험도 중요하지만 이 언어도 중요합니다. टॉपिक का एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है और कोरियन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 유학생을 위한 취업 지원 센터를 별도로 만들었습니다. जॉब सेंटर जो है वो ऑलरेडी बच्चों के लिए दोंगवन यूनिवर्सिटी में मौजूद है। 주로 학교 주변에 위치했습니다. 회사들은. ये दोंगवन यूनिवर्सिटी का मैप दिखा रहे हैं और ये आपको ख्वांगजू, हानम, सोंगनाम, ईचन और सोल ये इजीली 30 मिनट के दायरे में आप इजीली पार्ट टाइम जॉब इजीली कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनीज के साथ MOU साइन हुए। ये फॉरेन सपोर्ट सेंटर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है पहली दोंगवन यूनिवर्सिटी ऐसी है साउथ कोरिया में जो इन्होंने फॉरेन सपोर्ट सेंटर बनाया। 학생들은 우리 가족이라고 했습니다. अभी आपको इन्होंने बताया था कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे मेरी फैमिली और मेरे बच्चे। 학생들이 어려움에 처해 있을 땐 학교가 발벗고 나서서 도와줘야 됩니다. जितने भी बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी साउथ कोरिया के अंदर तो वो यूनिवर्सिटी उनको सॉल्व करेगी। 전국에서 유일할 겁니다. साउथ कोरिया के अंदर ये एक ही डिपार्टमेंट है जो दोंगवन यूनिवर्सिटी में मौजूद है। 유학생 고충 처리 위원회라고 합니다. स्टूडेंट फॉरेन सपोर्ट सेंटर। 여기에는 이제 변호사, 노무사, 행정사 이런 분들을 도움받을 수 있습니다. जितने भी वकील्स हैं जितने भी लॉयर्स हैं उनकी टीम्स वहाँ मौजूद है। अगर आपके साथ साउथ कोरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है लीगल कोई भी इशू होता है तो वो दोंगवन यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आपकी हेल्प करके सॉर्ट आउट कराएगी। 교수님들이 힘으로 안 되면 외부의 전문가의 힘을 얻어서라도 도와드리겠습니다. पूरी जितने भी बाहर से लोग हैं या अंदर से लोग हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है सपोर्ट की जाती है। 저 번호는 입학하면 모든 사람한테 공개합니다. ये जब भी दोंगवन यूनिवर्सिटी में जैसे ही जो भी बच्चे जिनका एडमिशन हो जाता है साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनको यही नंबर बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे इसी ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 졸업을 하더라도 계속 도와드릴 겁니다. आप साउथ कोरिया में दोंगवन यूनिवर्सिटी से पढ़कर चले भी जाएं साउथ कोरिया में जब तक मौजूद हैं कोई भी प्रॉब्लम होगी ये आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 다른 대학에선 이런 약속 안 할 겁니다. ये कोई भी इस तरीके का वादा नहीं करेगा लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जितने भी बच्चे वहाँ होंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको सपोर्ट की जाएगी। ये सामने यूनिवर्सिटी अब
이 건물들은 제가 건축을 계획하고 설계사하고 설계를 해서 건축할 때 현장 감독을 직접 했습니다. ये अभी आपको इन्होंने बताया था कि इनको एजुकेशन सेक्टर में 40 साल हो गए, तो तोंगवन यूनिवर्सिटी को 30 साल हो गए, तो जितनी भी ये यूनिवर्सिटी बनी है वो इन्होंने अपने हाथों से ही बनाई। 그래서 누구보다 더 애정이 있습니다. क्योंकि मुझे ये यूनिवर्सिटी मैंने एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है, तो मुझे इसका सारा पता है। 네, 지난 3월 달에 우리 파키스탄 MAO 대학의 총장님께서 파키스탄 학생 22명을 동원대학에 인솔해서 오셨습니다. ये पिछले तीसरे महीने में ना पाकिस्तान से जो गवर्नमेंट के पायलट प्रोजेक्ट पे 25 बच्चे साउथ कोरिया गए थे, तो उनको मैडम आलिया यहाँ मौजूद हैं, वो ही उनको लेकर आई थी साउथ कोरिया। 우리 총장님께서 동원대학을 전체를 다 이렇게 둘러보셨습니다. 동원 यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो मैडम ने अपनी आंखों से देखी है। 우리 총장님께서 인사 말씀과 곁들여서 동원대학에 다녀오신 소감을 잠깐 듣도록 하겠습니다. अभी हम मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दोंगवन यूनिवर्सिटी इन्होंने देखी थी तो वो आपको थोड़ा 총장님 सा बता दें। 모시겠습니다. अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से आई हूँ। मैं MAO कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर आलिया रहमान ख़ान। हमने भी पिछले साल, आप जैसे आप लोग अब सीख रहे हैं, पिछले साल हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो हमारे 25 बच्चों के वीज़े लगे थे, जो मार्च में मैं उनको लेकर गई थी। ये सारी चीज़ें हमें उन्होंने बार बार समझाई थी, बताई थी, और हम भी यही सोचते थे कि ऐसा होगा। इससे भी ज़्यादा अच्छा था, अगर सच बताऊँ तो। हमारे पास जो बच्चों के पास बैगेज ही था, वो था 23 kg का, और उसमें वो क्या क्या लेके जा सकते थे अपने कपड़ों के अलावा। तो हम जब वहाँ पहुँचे हैं रात को, फ़्लाइट 6 बजे हुई है, फ्राइडे को गए थे। फ्राइडे की रात का खाना, सैटरडे की रात का खाना, संडे की रात का खाना टोटली यूनिवर्सिटी ने दिया था। और फ्राइडे की रात को जो उनको बच्चों को हॉस्टल छोड़ के आए हैं, VC साहब खुद गए थे, साथ डॉक्टर शहजाद थे। ना सिर्फ बच्चों को बर्तन लेकर दिए कि सुबह आप लोगों ने नाश्ता क्या करना है या सुबह क्या पकाना है, उनके बेडशीट्स, उनके कंबल, उनके ब्रेड, अंडे, प्याज, टमाटर, घी, सब कुछ। इस वॉज के एक घर से उठ के दूसरे घर जा रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। और मैं हैरान थी कि हमारे पास भी जितने लोग आते हैं, हम जितना मर्जी अच्छे हो जाएं, इतने अच्छे फिर भी नहीं हो सकते कि हम ये भी सोचें कि सुबह उठ के उन्होंने क्या कर लेना है। और सुबह आकर वो पहला दिन था, और अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चलें और हम मंडे को और ओरिएंटेशन के बाद मज़ीद वो चीज़ें ले दें जो इनको कभी भी ज़रूरत होंगी अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जब तक इनकी जॉब्स नहीं लगती। अब मैं 10 डेज़ के लिए गई थी, और उस 10 डेज़ में से पहले मंडे को इनकी क्लासें शुरू हुई हैं और मेरी सैटरडे को फ़्लाइट थी। सैटरडे से पहले 25 में से 15 से 16 बच्चों की जॉब्स लग चुकी थी। और जॉब्स ऐसे नहीं होती कि आपको वो कहेंगे कि आप वहाँ चले जाएं। वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप भी है, यानी कि वैन्स आती हैं, आपको पिक करके लेके जाती हैं, आपको वापस छोड़ के जाती हैं। प्लस इन्होंने इतना, अब पाकिस्तानियों के हिसाब से सोचते हैं कि अगर एक लड़की को जॉब दिलानी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि एक लड़की को अकेली जॉब दें, हर जगह 2-2 लड़कियों की जॉब। के हम पाकिस्तान में
थोड़ा डर के निकलते हैं कि अकेली लड़की कहाँ जाएगी, तो इनके अभी जहनों में ये खौफ होंगे। तो हम पहले इनको अपना इन्वायरमेंट दिखाएं और 2-2 लड़कियों की ड्यूटी लगाई, और उसके बाद उन्होंने फिर अब आई थिंक डिफरेंट रिजॉर्ट्स में या डिफरेंट जगहों पे बच्चियाँ अलग-अलग भी की हैं क्योंकि कॉन्फिडेंट हो गई हैं। फिर उनको उनके फ़ोन्स के सिमें लेके दी, यानी कि यूनिवर्सिटी आकर उनको हर चीज़ फैसिलिटी मिलती थी, उनके बैंक्स ओपन कराए। आई डोंट नो, मेरे 10 दिन के अंदर अंदर इतना कुछ हो गया था कि मुझे लगता था कि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए शायद आई थी। और बाकी जो ये सारी चीज़ें इन्होंने टेक्निकल बातें बताई हैं, ये जेन्युइन है, ये तो वर्ल्ड वाइड एक नोन है। जो आप लोगों को नहीं पता है वो मैंने आपको बता दिया कि टोंगवन एक अकेली यूनिवर्सिटी मैंने अब तक देखी है जो बाहर के स्टूडेंट्स को अपना समझ के